Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. Or we have been waiting for this panel to get together. I know that Dhenuka is here. By the way, यार मानस निधि भी join करेंगे. मतलब मैं करीबन मतलब एक साल से try कर रहा हूँ यार, for whatever reason, when all four of us have not been available at the same time. I don't know why we have not done this stream together on my channel. लेकिन हाँ, हमेशा I try for it. लेकिन finally we have gotten that, and great to have Dhenuka again. Dhenuka, first of all, how are you? Excited for this match? Or kahin na kahin your favorites? Let's be honest. I'm pretty sure your outright favorites. Yeah. So that's what I've been saying. So last season maybe not, but this season we did go in as favorites. And given the kind of season we had last time, and then going into the Champions League this season with pretty much the same team, so we were definitely we are definitely favorites going into this. But yeah, again, never say never. Mera to wahi funda hai. But yeah, definitely more favorites this time than last time for sure. Yeah, और मतलब ये history में भी to be honest नहीं हुआ है, and that's why I'm saying it quite obviously, because I think no side has ever come back from a 3-goal margin after a home defeat, with the 3-goal margin and knockout UCL tie. If anyone can help me out, which is the highest margin and which is that team जिसने किया है? It's not 3 goals, it's 2 goals. Let me tell you, जो पहला knockout, मतलब even Chelsea for that matter have done it, but first leg is not at home. वो वाला यहाँ पर first leg was at home for Liverpool, right? So where they lost 2-5, and one team has done it by losing by a 2-goal margin. Anyone in the chat or भाई Dhenuka, in case you remember? Okay, no, I won't say. Okay, I have a hunch, but let's make it interesting, no? That's a clue, I guess. Hashtag is kind of given away in a sense. Yeah. This is a clue in itself. That's what I was but going I to think say. it is Let's keep it interesting in the chat. Manchester United. It is Manchester United of all teams, and I think it was the PSG win, if I'm correct. It was a PSG वाला वहाँ पर. I know Lukaku for a change did once. Yeah. I know उसके बारे में बात करना है. Yes, by the way, जो भी लोग जुड़े ना, first of all सबसे पहले like कर दीजिए stream, because वो हमारा stream का चाबी है, हमारा stream का खाना है. तो भाई let's like the stream, and in case you're new to the channel, consider subscribing to the channel. Absolutely, it's a fan channel for all to see. We cover end-to-end UCL, UEL, World Cup by Dhenuka. I know after World Cup, I think we have just had one stream after World Cup. Like, and hopefully we'll have many more streams, depending on how far Real Madrid goes, of course. Like, even otherwise, you're welcome. Like, everyone, do check it out, and do not forget to also check out Bombay Penya. Yaar. Bombay Penya ka, as always, I have tagged them below. So, bhai, you can find out Dhenuka ka Instagram ID, Bombay Penya ka Instagram ID. Give them a follow for sure. In case you don't know, there's a lot of activity which always goes on. संजीव हेलो यार, फोर्सा बारसा, यस थोड़ा बहुत बात करेंगे, चैंपियंस लीग टॉक से ज्यादा है, बट लाइक आई सेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट Madrid, Liverpool, City, Leipzig, वहां पर potential banana skin है, and then we'll obviously going to Inter, Porto and others. अभी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे. Absolutely. Madrid 8 to aggregate already. भाई यहाँ पर people are giving predictions already. रुकिए बहुत सारा बात करना है around Real Madrid, and by the way we'll be joined by the Liverpool panel as well in just a few minutes. हम शुरू करेंगे थोड़ा Real Madrid talk से, then we'll go on to the match, and of course जो clubs की हम बात करेंगे. Absolutely. 15 टाइटल लोडिंग हाला मैड्रिड बोल रहे, देखते ऑल द बेस्ट यार. मैं तो बोलता हूँ अगेन, हमारा भी चांस है, थोड़ा सा बोलूंगा उस पर आएंगे, एब्सोल्युटली आएंगे. लेकिन टॉकिंग अबाउट चेल्सी एंड रियल मैड्रिड यार, कार्लो एंचेलोटी इज समवन हु कनेक्ट्स बोथ द क्लब्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन फैक्ट. तो पता नहीं क्या, मतलब आई नो बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंसेस रहे हैं 2-3 बिफोर द एस्पेनियल गेम. आई थिंक इट वाज व्हाट ऑफ कोर्स कोपा डेल रे फर्स्ट लेग जो था, और Atletico Madrid वाला match, I didn't expect it to be that flat, to be very honest. And then obviously you got to win against Espanyol. लेकिन Carlo Ancelotti के there were a lot of reports saying that नहीं, he might actually get the sack. As in, it's unbelievable for me. Like definitely मैं तो ले रहा हूँ with a pinch of salt such news. Carlo Ancelotti यार, he has earned to kind of walk the moment he wants to, right? As in I believe so, नहीं? Even though it's Real Madrid. Yeah, I believe so, but वही है ना कि हमारे बिलीव करने से कुछ नहीं होता है. दिस इज हाउ रियल मैड्रिड रूल्स, अनफॉर्चुनेटली. So if we don't win, if we go trophyless, Carlo is pretty much out. So this is how the club works. It doesn't matter how you like what you and I think, and whether it's fair or not. It's that's how this club has always ruled, and that is how it will roll. Because वो बोलते हैं ना, heads will roll. तो उस केस में अगर कुछ नहीं मिला तो
Carlo is definitely out. I think for sure he's out, Right. and they'll look to get like a replacement, of course. मतलब एक जगह Klopp tried some gamesmanship in my personal opinion. Again, I respect Klopp a lot as well. लेकिन I think उसने मैच के बाद में जो हुआ था, he said that in the interview that Carlo already thinks that it's over, and then the next moment Carlo was interviewed and said no way it's over. So I think there was some amount of gamesmanship, but we all know that मतलब coaches always protect their teams and vice versa. वो Yeah, होता yeah. ही है. So that's fair enough, right? And लेकिन Carlo always talks about the Milan thing, right? Like he always goes back to that, saying that we can pretty much like look like we won the game, we've sealed the deal, but no, things happen, and it has happened to me, so I will never be. That's what he said last season. So yeah, he's not one to kind of say कि हाँ it's done and it's a done deal, and yeah. थोड़ा बहुत तो banter and everything between managers and all of that वो होता ही है, like a little bit of back and forth, and outright तो कोई ऐसा कुछ बोलेगा भी नहीं, Exactly. and बोलना भी And नहीं I think चाहिए there's a lot मुझे of नहीं लगता. respect between the two teams. To be honest, there's a lot of respect. I know that Yeah, it's like he कहीं ना said कहीं कि मैं e-cigarette and everything. Klopp and Carlo but and e-cigarette. interestingly you said Milan because I don't know if you realize भाई everyone भाई मैंने उसके बारे में post भी किया था. It was a crazy week for me personally. Like Chelsea मतलब crazy win against Dortmund. Yeah. Milan obviously going through the Yeah. quarters huge as well, and of course यार अभी as things stand I think for people who follow ISL the second semi-final is going on, the second leg. तो भाई my team Bengaluru FC is already there in the final. तो it's a crazy week. तो भाई हम side by side वो भी यार आंख रख रहे हैं, absolutely नजर रख रहे हैं उस पर. लेकिन अगेन टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड जनरली इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म ना, अब एस्पेनियोल के साथ भी इट वाज यू केम फ्रॉम बिहाइंड, राइट? आई थिंक एस्पेनियोल स्कोर्ड फर्स्ट ऑफ द वीकेंड. Yes. तो अगेन मतलब इज इट अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक अगेन इन अ गेम जस्ट बिफोर दिस टाई? क्योंकि ओनली रीजन आप अगर शॉक हो सकता है इज दैट अगर रियल मैड्रिड आर काइंड ऑफ नॉट इन दैट प्रॉपर थर्ड गियर एटलीस्ट, राइट? अगर वो बहुत ही फ्लैट रहे तो यू नेवर नो, राइट? एज एन despite it being Santiago Bernabeu, like you think coming back वाला चीज जो Real Madrid के DNA में आ गया almost, is it a good thing that they've got that kind of win against Espanyol? Yeah, एक तो ये है कि it also makes a difference तुम किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हो, right? Like UCL एनर्जी रियल मैड्रिड का एक अलग ही अलग ही है. They play, you can see the way even like a Benzema approaches a UCL game versus like a La Liga game, and वो एनर्जी अलग है. And the thing is, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि it is the same with Liverpool. Okay, they are also like that. तो उनकी भी UCL energy is like a little different from whatever is going on in their league. They are tightly chased, and well, not a chase this time, but whatever is happening in the league for them. लेकिन मैं overall I would say that it's more interesting to see the game on the whole, क्योंकि कोई कोई गेम्स में ऐसे होता है कि रियल मैड्रिड इवन आफ्टर सॉर्ट ऑफ एक गोल खाने के बाद भी देयर इज नो काइंड ऑफ वो सेंस ऑफ अर्जेंसी डजंट किक इन, और वो मेरे लिए मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक लास्ट गेम में वर्सेस एस्पान्योल it was important ki as soon as that happened, right? Like that like they shifted gears, they said okay, no, nothing doing, and they kind of throttled Espanyol, and kind of like that mentality is what you want to see even in La Liga in every game. So that for me is a little kind of it's not as worrying because that mentality is important. As soon as something happens, you kick back, and you don't sort of sit and rest. And someone in the chat I think mentioned, and I'm very bad at reading chat comments, okay, so please recommend, because I don't read comments. But someone I think mentioned, and I don't know for whom they mentioned, क्योंकि मैंने वो एक ही comment देखा कि the strategy is going to be park the bus, right? Yeah. So obviously it will be for Real Madrid. Park the bus होगा तो हाँ, park the bus tactics, easy win. So मुझे ऐसा लगता है कि this is a very slippery slope. Real Madrid के लिए it is a very slippery slope. जब भी हमने ये करने की कोशिश की है ना, it has backfired spectacularly, क्योंकि we are then sort of relying on our defense, which has not been the greatest. Militao has been really good. Nacho last game against Liverpool was fantastic. But we are a side who actually we do concede
we also score a lot. So this parking the bus, this sort of trying to just score on the counter, this kind of a situation, it kind of gives me hives. मुझे वो थोड़ा वो हमारा I feel like we that is where usually what we do is we will let the team come back, the other team come back, and then we'll push. And no matter, like, fine, like comebacks are good, comebacks are great in retrospect, it's all amazing. But that Chelsea game last season, I mean, um, I think Real Madrid fans have collectively lost years of their life because of these games, the way Real Madrid plays. Like, don't do this, right? Like, why, like, let the game get to a point where you, like, the other team stages a comeback, be it versus Juventus, be it versus Chelsea. You let, like, you get us to that stage, and then it's like, okay, game's on, but why even let come back to that stage? So that is something I'm a little worried about. um but हाँ वही तो, but other than that, मुझे लगता है कि लिवरपूल again unpredictable hai. They can score a 7-0 against United, and then they can go ahead and like lose 7-0, 1-0 2 goals. loss, and then before Yeah, that भाई आप देखो तो मतलब it has been totally मतलब लिवरपूल के साथ obviously we have to speak to Nidhi and Manas कि sure, there is yeah, something wrong there for sure. लेकिन again in a European night, on a European night you cannot take any side lightly, especially yeah, Liverpool मैं तो बोलता हूँ. yeah. And yes, for all of you यार मतलब I know Manchester United की हम बात किए थे about them kind of getting that comeback against PSG. Was it 2 goal का margin था despite losing at home. लेकिन यार आपको याद है तो मतलब obviously last season मैं याद दिलाना चाहूंगा Dhenuka and everyone को, not a pun, लेकिन the fact is we almost got there. Chelsea भाई, you Yes, remember वो Alonso yeah, का handball नहीं होता तो you never know, it yes, was so close, actually it was so close to be very honest. But हाँ, that and I think was it Ajax I think 4-1 beat Liverpool, sorry, Real Madrid at Santiago Bernabeu जहां तक yes. मुझे याद है. And that was Yes, something तो it is possible, ऐसे नहीं कि एकदम yeah. impossible है, लेकिन again it's Real Madrid and of course they are the holders, they have एक number over Liverpool वो clear है, especially Vinicius Juventus Junior जिसके बारे में almost बात staged करते the हैं. comeback, Yeah. 2018 May. I think it was they were also trailing, and then almost staged a comeback till that till finally we won. That was the Yeah. season we won against Liverpool, I think. बट आई एम हाईलाइटिंग दिस कमेंट अगेन क्योंकि यार मुझे लगता है दैट रियल मैड्रिड का फोकस ना, जो फ्लैटनेस हम बात की है अबाउट सर्टेन लीग गेम्स और इवन टू सम एक्सटेंट कोपा डेल रे भी, कहीं ना कहीं मतलब जो अगेन वही है कि यार दे नो दैट दे आर प्लेइंग फॉर दिस अगेन. मतलब वो क्लियर लग रहा है मुझे. मतलब अगर रियल मैड्रिड वांट्स टू काइंड ऑफ अप द गियर, दे कैन अप द गियर. कम ऑन, जो रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग 11 है, आई नो स्क्वाड में देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसफर्स, लेकिन कहीं ना कहीं I think it's about this UCL, right? As in, so I think that is the main thing that you are hoping, right? As in, you're knowing that Dhenuka, you're confident is because it's a European night, it's at home, and you know that this season, as much as technically Carlo Ancelotti bola na, it's not impossible 9 points Barcelona ka, but still the reality is that it's cup competitions mainly, right? So it's kind Yeah, of understood वहां पर. लेकिन again, in terms of the squad अगर आप बोलो तो a lot of news is coming in the last 48 hours especially यार. मतलब पहले लास्ट वीक वापस आया था एम्बापे न्यूज, वापस आया था विच ऑलवेज कम्स, लेकिन क्वारस के लिए ना कविचा क्वारस के लिए भाई इज अ ह्यूज गुटी फैन फॉर पीपल हु डोंट नो, भाई इज अ ह्यूज रियल मैड्रिड फैन. तो अगेन मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बट if you had a choice, I know that more the merrier, लेकिन if you had a choice for next season or maybe the season after, what are you seeing, like Kvaratskhelia kind of being part of the Real Madrid setup, or then how would Real Madrid set up, or you are saying nahi Mbappe is preferred, or of course both is the best option, लेकिन अगर एक ही choose करना तो who do you think is more likely? likelier, or would I like to have? Okay. अरे भाई तो मुझसे भाई ने बोला था कि बेसिकली चेल्सी हार रही थी ना लिटरली, तो बेसिकली व्हेन चेल्सी स्टार्ट विनिंग इज लाइक डोंट शेम, ओके, तो मैं अच्छा चलो देखेंगे वाला, मतलब मुझसे मैं हामी नहीं भरा था यार, कम ऑन. लेकिन टू कीप मुसेस बाय हिज वर्ड, आई डिड नॉट शेयर फॉर आई थिंक अ कपल ऑफ वीक्स यार ऑलमोस्ट. तो चलो फाइनली हैड टू ब्रो, कम ऑन, इट्स समर. बट एनीवे थैंक्स अ लॉट फॉर सुपर चैट ब्रो, एनीवे शाउट आउट आपको. लेकिन हां प्लीज दिनुका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्वारत्स्केलिया एम्बापे? I would like to have Mbappe, to be very honest, and but like I said, it's not. The reports again coming in are that unless now Mbappe himself comes out and says he initiates the whole thing and says he wants to be at Madrid and he wants to do this, the club is not going after him, with fair reason. So, but he is something, and
I would any day take him in the team. So Interesting. And We Talk Football is asking, what happens to Real in the starting 15 minutes? They concede 75% of the goal in first 15 minutes. Is it a case of वो back four change हो रहा है बार बार? Again, I think weekend में Rudiger नहीं था. For instance, I know यहाँ पर एक मैं highlight नहीं कर रहा, लेकिन Mendy seems to be closer to back as well. तो मतलब what do you think is the best for back four right now for Real Madrid? Because that is a concern for sure. Yeah, I think Mendy is back, but Mendy is just back from injury. So I don't think Carlo will start him. I thought that Nacho had a very good game against Liverpool in the first leg. So अरे I'm नाचो का guessing वीकेंड में क्या रन था यार वो मतलब आई थिंक इट वाज असेंसियो गोल ओ माय गॉड yes. Brilliant So, run. so for me, to be very honest, Nacho has been very underrated this season. Last season की बात नहीं करूँगी, but this season he has been very underrated. There have been games in which he has been really good. He has been really good, and especially that Liverpool wala Liverpool first leg also, because I remember there was this discussion about whether Camavinga should go there or Nacho should go there, because Carlo also experiments like playing Camavinga in that left back position, and I had sort of said that no way, like not for a big match, no, because he's not, that's not his natural position. That's in no way, like I love Camavinga, and but that's not his position, and so I don't think Carlo will definitely take that gamble, but also और although was it a Mendy case is of available. Was it a case of Chouamani being back इसलिए और Kamavinga मतलब technically he deserves like a starting spot somewhere. Yes, That's how good he's been at yes, times. I know Liverpool yeah, का पहला 20 minutes he was little bit iffy, लेकिन apart from yes, that I think Kamavinga बहुत he had अच्छा a दिखा है. fantastic game. Yeah, तो कहीं ना कहीं he kind of gave him a start. That's what मेरा understanding था. But you're right. As in Kamavinga is not really left back जो हम देखे थे even in he's the World not, Cup final. He can do that. and But so yeah, he can do that, and in a game against like an Espanyol or whatever, it's fine, but not against Liverpool. I don't think so, especially when you have options, right? And I think it's unfair to also not start Nacho if he's available, because he has been in really good form, and he did play really well against Liverpool at Anfield. Um, uh, Coming back to that point, I know Mendy is back, but I still think this to be his first game post injury is a little iffy. So I doubt if Carlo is going to start him, and yeah, I really doubt that. Uh, yeah. To me, according to so me, Nacho basically will you start, are and going then with we'll have the tried and tested जो recently शुरू किए मतलब you're going with tried and Nacho, tested. Nacho Rudiger, left back, Militao. Rudiger, Militao. So like this हाँ season he is a again, sure shot हाँ Militao, sure shot. बिल्कुल Yeah. So Rudiger, Militao, and Carvajal. Carvajal. Got it. And midfield में again Chouamani. I think यार again not just Chouameni, for Nacho. sure. Chouamani का assist यार मतलब I believe your favorite यार Modric has been giving him lessons supposedly. Everyone is now scoring those. Everyone is now scoring out of the boot kick. So पहले that's मुझे very लगा कि good. रबोना किया क्या फिर मैं ध्यान से करी रबोना तो नहीं था लेकिन फिर भी इट इज वेरी फॉर चोमनी अगेन मतलब मैं पहले बोला था रिमेंबर लास्ट सीजन वी वर डिस्कसिंग देनुका रिमेंबर एंड लास्ट सीजन हम डिस्कस करते अबाउट कैसेमिरो तो कैसेमिरो का कहीं ना कहीं हिज पासिंग वाज अंडररेटेड आई थिंक चोमनी विल कम इन द सेम कैटेगरी और आई फील दैट दिस गाय कैन एक्चुअली पास वेरी वेल फॉर व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ हिम लेकिन टॉकिंग अबाउट कैसेमिरो भाई एवरीवन इन द चैट आप लोग भी बोले बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ लास्ट 24 आवर्स कि कैसेमिरो का रेड कार्ड था कि नहीं रहा भाई आई हर्ड कि रियल मैड्रिड में ही नेवर गॉट अ रेड कार्ड और ही इज नॉट गॉट अ रेड कार्ड इन चैंपियंस लीग तो मतलब he always had the tackle in him but do you think the Premier League has gotten him being a little bit more aggressive or is it just the Premier League referees well what's your take I don't know. So I didn't see that game. So, but from what I saw, only in the highlights, and I don't know. At least highlights, me you can never make out, I guess, right? Whether yeah it's what the situation मेरा is तो and क्लियर what. मैं तो So was basically it he a went red for or the was it challenge not a red? Is the first question. There seems हाँ to be some controversy there also. नहीं So rule ही यार it's a gray right problem is the rule is like when you go for the ball now he yeah, scraped through the surface of the ball and took the correct. shin of the player तो Yeah, टेक्निकली स्पीकिंग बाय द रूल लेटर contact. ऑफ लॉ वो रेड कार्ड है लेकिन यहाँ Right. प्रॉब्लम यहाँ मेरे मुझे भी प्रॉब्लम है Consistency. इवन Yeah. you don't give a red card initially and then VR is telling that's clear and obvious to change it to a red card and that's a problem लेकिन now technically दो ऐसे हुए और दो red card मिले and that is why he's out for 4 games so that is why my So question is like was he that kind of a player or is it that Premier League में होता ना कहीं it's more physical then you tend to kind of go more
So maybe he's doing that again. Casemiro has been a brilliant signing for Manchester United, generally speaking. Akash in the house, Salah revenge कब लेगा? By to be honest, he is the highest goal scorer in the Champions League this season. Correct me if I'm wrong. I think Salah actually is coming back to form. Yes, weekend में he wasn't great, but we'll be talking about that for sure. I think rest of the team kind of picks itself, right? So you're basically going with the two experienced midfielders, or what is it? Are you going for Kamavinga? मैं नहीं, Carlo is going to go with his two experienced midfielders. And it's going to be Tchouaméni as the third midfielder. So it's going to be 4-3-3, and it's going to be Tchouaméni, Kroos, Modric, and and then Benzema, and then Vinicius and Fede. Fair enough. Again, भाई जो भी Real Madrid fans or even neutrals, you tell me what is the best 11 again. मतलब tactically should they sit? Secondly, is it the best 11 जो Dhenuka ने बोला, which makes sense? What Carlo is, we know that he'll probably go with that 11 itself. I don't think there will be lot of question marks यहाँ पर. लेकिन again, यहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत हो रहा है लास्ट 24 आवर्स में. बेलिंगहम यार 3-way टाई हो रहा है, और आई नो समर में हो सकता है मिस्टर टॉड बॉली भी आए. तो भाई अगर मैंने एक्चुअली एक स्ट्रीम में रिसेंटली बोला था एक चैनल में कि अगर बेलिंगहम मिस करते हैं रियल मैड्रिड, मतलब अभी भी रियल मैड्रिड लुक्स टू बी फेवरेट्स, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पंडित्स को सुन रहे हो, स्पेशली एक्स लिवरपूल, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बेलिंगहम इज गोइंग टू लिवरपूल. अब डिपेंड्स ऑन वेयर लिवरपूल एंड्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग. लेकिन what is the backup right now? What is, do you think there's a backup, or Bellingham is the guy that no matter what you have to get Bellingham? So मेरा ये है कि I think there are other positions that are more worrying. Midfield is one place where it is, I would say it is not as bad, because technically देखो we are making Fede play on the right wing, on the right. Fede is a midfielder, so you already have Fede, Tchouaméni. I believe one of Kroos or Modric will sign the contract. Makes so sense. You have one of those two, and then you have Camavinga. And then we also have Ceballos, who has been in Very good. sparkling form, and actually to me totally deserves a contract. Absolutely deserves a contract. He's a proper Madridista, hypes like everyone up. He's just been really good, and whatever minutes he's been given, he has, maybe with the exception of like half a game, I would say, or 1/4 of a game, he's always been excellent. So Manas, what's up? Welcome. Thank you. Dhenuka, please continue. So nothing. Ceballos Purana was starting. So anyway, so basically I think we already Ceballos is a plan B. Basically, yaar, you're good with Ceballos. Barabar, you've come on time. Like it's almost like Jude Bellingham बोला तो Bellingham की लड़ाई हो रही है शुरू, और by the way चेल्सी भी है लाइन में कहीं ना कहीं. So no, I was saying that Bellingham, Real Madrid will not prioritize him, because midfield is, to me at least, one of the positions where we are fairly okay. I think other positions need more reinforcements, but that's me. Fair enough. Acha, by the way, everyone here, again, welcome to Manas. Hopefully Nidhi will also join us in a few minutes. By chance, if anyone is not subscribed to Menace in the Morning, you are missing out on a lot of content. And यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितने भाई, almost 160 people are watching us. Hope everyone has hit that like button. Looks like it not. We have 90 likes. Come on, let's not do what Chelsea used to do for many weeks. Let's score some goals. यहाँ पर हमारा goal है भाई. Let's get to 300 likes as soon as possible. So let's get there absolutely. और अगर आप subscribe नहीं हो, consider subscribing to our channels as well as the panels channel. Again, भाई बॉम्बे पेनिया को follow करिए, उनका Instagram ID नीचे. तो भाई बेलिंगहम के थोड़ा मानस is in the house. थोड़ा सा मतलब आई नो यहाँ पर थोड़ा सा दुखती रखने वाला चीज है मेरे केस में, तो क्योंकि यार माउंट का बहुत स्ट्रॉन्ग वाले आ रहे लास्ट 24 आवर्स में. लेकिन लुक्स लाइक व्हाट, बेलिंगहम टू मैड्रिड एंड माउंट टू लिवरपूल. कम ऑन, एज इन वी कैन नॉट हैव नथिंग यार. मतलब मानस क्या लग रहा है? गट फीलिंग इज व्हाट? What do you mean you can't have nothing? You've had everything over the last 1 year. You can't say that. That's me. We are still one midfielder short. You really can't say that, brother. You've got everything. You're like that spoiled kid, bro, जो माँ बाप से मलाबार हिल में रहता है और बोलता है मेरे को ये चाहिए, माँ बाप दे देते हैं. ठीक है. You're taking one of our own in Mount. That's not done, bro. तो can you see the option that you have कि मतलब
आप उसको जाने दे सकते हो, मतलब और मेरे को बेलिंगम के बारे में बात नहीं करना है ब्रो, इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट मैन, लाइक Now you know बट what we felt like about this Mbappe. This is not even 1/4 of that Mbappe हाँ saga. हाँ, Yeah, मतलब द थिंग इज वो आ भी जाए, आएगा तो तब देखेंगे, अभी तो मतलब इतना, मतलब इट्स सो फार अवे, it's like me trying to manifest Sania Malhotra in my life, it's next to impossible, you know, like बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अभी अभी उससे उसमें से आगे बढ़ सकते। उसमें से लेकिन नेक्स्ट आप टू हटा दे बस। लेकिन नहीं पुतिन इज राइट। नहीं, आई एम ट्राइंग टू से दैट जूड बेलिंगम तो पॉसिबल है ना, नहीं, मतलब वही थोड़ा, बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ, मेरा तो सानिया मल्होत्रा अरे का तो इम्पॉसिबल ही है, मैं जानता हूँ। बस करो यार, जूड बेलिंगम, बाप रे अच्छा चलो, बाप, लेकिन निधि निधि सिंस ब्लडी यू आर हेल। इन एज वेल, बाय द वे वेलकम निधि हाँ, भाई। मेसन माउंट यार, आई रियली वांट टू गेट इट फ्रॉम लिवरपूल फैन यार, मतलब रियली इज इट लाइक अगेन इज इट योर बैकअप ऑप्शन निधि, और यू थिंक लाइक एनीवे यू नीड टू मिडफील्डर्स, मेसन माउंट इज अ ग्रेट फिट, मतलब वेयर आर यू लुकिंग एज अ लिवरपूल फैन? यार अभी अभी जितने भी रूमर्स आ रहे हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं है, सच बता रहा हूँ, राइट, एंड दिस इज ट्रू अबाउट मोस्ट क्लब्स। वो पढ़ के हम लोग एक्साइटेड हो सकते हैं कि ओ इस रिपोर्टर ने बोल दिया, नहीं, एक्साइटेड हो लेकिन रहा है। मेसन माउंट का तो आई थिंक इवन आई नो पब्लिशर्स जस्ट आई नो आई नो ही सेड ऑल दिस, ठीक है, वो अब वो उसने बोल दिया है, और मतलब दूसरे क्लब्स में कल कल मैंने कल परसों यूनाइटेड का भी नाम सुना था वो लिस्ट में, ठीक है। अब सिटी वो यूनाइटेड लिवरपूल तीनों ही बेसिकली। सिटी यूनाइटेड लिवरपूल, यार देखो, पर्सनली आई स्टिल फील कि मे बी इट्स एन इम्पासे एंड ही विल एंड अप साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आई होप सो टू। क्या होता है ना इन सब चीजों में, जब व्हेन द ड्यू डेट कम्स क्लोज, जो इनकम टैक्स के रिटर्न के जैसा, देन Yes. सडनली आप जाग जाते हो, आप एक दिन में सब Right. खत्म कर देते हो, ठीक है। तो वैसा कुछ मुझे लगता है होने वाला है, मतलब आई ऑब्वियसली ट्रांसफर्स आर समथिंग दैट एक्साइट्स अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक मेसन माउंट इज, उसको फालतू में बहुत गालियां मिलती है, आई थिंक ही इज अ हाँ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक ही कैन डू वेरी वेल, पर्सनली मुझे लगता है, बट क्या वो लिवरपूल आएगा, आई हैव माई डाउट्स। आई थिंक ही विल फिट वेरी वेल, बट आई डोंट थिंक वो होगा। The thing is ना अंकित, like Chelsea last 3 गेम 3 at the back खेला और तीनों जीता है, and when Chelsea plays 3 at the back, Mason Mount can't fit in. नहीं, बट Simple. अंडर टुकल ही डिड वेल 3-4-2-1 में, दैट्स व्हाट आई नहीं, एम but सेइंग। मैं तेरे को अभी like hear me out. You play 3 center backs, then you play Chilwell, then you play Reece James, then you करेक्ट। play 2 midfielders. Okay. उसमें से एक एंजो होगा, वेंजो स्लैश कांटे स्लैश कोवाचिच स्लैश कोवा, whoever. Then you play राइट, your 3 up top. Okay. करेक्ट। उसमें आपके पास कम से कम 600 प्लेयर है जो 3 प्लेयर चूज करने के लिए, उसमें से मेसन माउंट इज नॉट वन। सो मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि आई कैन सी व्हाई ही वांट्स आउट लिवरपूल में। अगर आप सीरियसली मेरे से बोल रहे हो कि आई कैन सी हिम बीइंग काइंड ऑफ यू नो लाइक नॉट लाइक फॉर लाइक, बट जीनी का रिप्लेसमेंट जो हम सालों से ढूंढ रहे हैं, you know, carrying the ball, recycling the ball, passing the ball, scoring an important goal here or there. Mason Mount Correct. करता है वो। So Mason Mount अगेन इट कम्स डाउन टू, अगर वो 180, अगर 180 ना बोल रहा है वो चेल्सी में, हम हमारे लिए 180 इज अ प्रीमियम प्लेयर, यू नो, हम हमारे वेट बिल्कुल स्ट्रक्चर, आप राइट, समझ रहे बट हो? वहां पर यू आर हैविंग हिम एज अ स्टार्टर राइट, तो थोड़ा बहुत ये भी होता है ना, मतलब I agree now how we sell it to him. I would love to have Mason Mount at a club, I mean honestly. Klopp यार, come on, you will be tempted, like if Yeah, I'm yeah, being Mason Mount I'm like no but the matter thing what. is ना, 1 साल बाकी और अगर तुम 60 मिलियन मांगोगे, then it is a no-brainer not to go for it. 60 million for 1 year. अब this is what I'm hearing. 60 million 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है. I really 60 like him million and तो rate him. But 60 million आप 1 साल बाकी है. It's Yeah, this. but he's arguably an England starter as well, plus he's still entering his prime. I agree. But मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मेसन माउंट के टाइप का प्लेयर आपको फिर पोर्चुगीज लीग में या फिर बुंडेसलीगा में आधे प्राइस पे मिल जाएगा. Actually, yeah, that's true. नहीं, मैं बेस्ट केस लिए Dhenuka, come on, best deal है. Let Bellingham go to Liverpool. Mason Mount, I don't mind so much that he goes to Real Madrid. Eventually वो वापस आएगा इंग्लैंड कभी ना कभी, and that might be the best case scenario. And we get a new midfielder. That will be the best case scenario. तो Mason Mount can play in a 4-3-3 यार, कितना मतलब come on. मिडफील्डर, और कितना वो मैं मिडफील्डर, बोल रही मतलब हूँ नहीं, ना, हमें that's
तो जकारिया, अच्छा यहाँ पर रिपोर्ट्स आर वी आर नॉट गोइंग फॉर जकारिया फुल टाइम, इसलिए वो खेल नहीं रहा है पॉटर. तो थिंग इज वी नीड सम, अगेन कांटे इज नॉट रिलायबल एनीमोर ना, सो वी नीड समवन हु इज बेसिकली यू नो एबल टू हैव दैट मतलब फिजिकल एलिमेंट सो दैट एंजो कैन डू हिज जॉब. नावी केटा. वाओ. स्वॉप भाई, क्या स्वॉप ऑप्शन दिया, बट कोई नहीं. क्वेश्चन फॉर निधि, इफ बेलिंगम डज नॉट जॉइन लिवरपूल देन हु वुड बी द आइडियल चॉइस कंसीडरिंग थियागोस इंजरीज इश्यूज? I don't know. This is a very tough question to answer. ये फैंटेसी फुटबॉल खेलने के जैसा है. मैं 10 नाम बोल दूं, मुझे तो मतलब अगर तुम ऐसे मेरे से पूछने जाओगे तो आई रियली लाइक मैडिसन, आई रियली लाइक अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स. मुझे केविन डी ब्रुयने भी बहुत पसंद है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि केविन डी ब्रुयने, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि केविन डी ब्रुयने आ जाएगा. तो मतलब I don't know कौन, but there are a few players that can fit in. I really like the Barella, but he's again that's unrealistic. तो वैसे है. Fair enough. Anyway, भाई थोड़ा सा मैं मेरे को एक धेनुका से क्वेश्चन पूछना है. धेनुका, हाउ मतलब क्या लगता है एग्रीगेट 5-2 से 8-3 या 9-2 या क्या होगा आपके हिसाब से? तू ही आया था क्या वो कमेंट सेक्शन में अलग से? 8-2 आ गया था ऑलरेडी कमेंट्स में. मैं अभी जस्ट घर पे आऊं यार. मैंने अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम देख नहीं पाया जब से चालू है. Listen, all this reverse jinxing तेरा तो अपने पास ही रख. I'm not going to say 8-2 and all this drama. तेरे को लगता है मतलब 5-2 के बाद अगर आप ये भूत प्रेत अंधा I'll tell you काला why. जादू, हम लोग इसके पहले भी जब अगेंस्ट देखो, चेल्सी, मैं अभी वो जो कमेंट हाईलाइट किया था ना उसके बारे में बोला था. बेलिंगम और एंजो फर्नांडिस और ये सब ले लो, चेल्सी या कोई भी फर्मिनो के ऊपर नहीं. और वैसे भी फर्मिनो यू आर नॉट साइनिंग. फर्मिनो इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू इंटर मिलान. ये तो नहीं होगा, चाहे जो फर्मिनो नहीं जाएगा. बेलिंगम चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. actually there was this whole question about Firmino to Real Madrid at like not I in think, the I think that may be possible, but I think his most likely destination is Inter Milan or Atletico from what I've or heard. Atletico. So what were you saying, Dhenuka? Sorry. हाँ. No. So I was saying that ये क्या बोलते हैं, this whole situation, no, I was just telling Ankit that I usually get scared a little bit because like Real Madrid, when we lead, right, we go into this situation where there have been situations where we've sort of like dug ourselves into a hole. We've had to make a comeback, and then आगे जाके ठीक है, we won against Chelsea, beat against Juventus. But सब जगह पे हम लोग comfortable lead लेके ही गए थे, and Juventus का it was at the Bernabeu only, and वहाँ पे भी जाके it's not like it's next to impossible, okay, to do this. So and I was just telling this before you guys joined that the thinking at that time, the gameplay, if you go and this park the bus, try to score on the counter, this kind of thing always sort of gives me the hives when it is with Real Madrid, because it doesn't work out, and ultimately we find our game plan, we kind of come back and do everything, and all that is fine. But that I really hope we don't go into it with that, but there is a very high chance we are going to do that. I think that's kind of going to be the gameplay going in, and it's going to be like palpitations from moment one. And I don't know, like Liverpool since then has been unpredictable. Yeah, like even before the 7-0 thing, it was still unpredictable. It is the UCL, and against big teams, you never know how Liverpool sort of shows up and which Liverpool shows up. So 8-2 is like I don't think so. Like I don't think it's going to be that. Yeah. And Real Madrid, हम लोग गोल खाते हैं. I'll tell you that openly now, and you guys also know that. So I don't see it as like that much of a bada score line. I just hope it's not one of those moments again where you're like, oh my god, we have to stage a comeback again. Like I. By the way, Benzema weekend में नहीं खेला ना, मतलब is this a major issue? I don't think so, right? Injury. So he should play, but he's injured for good. Like no. For the Espanyol game, I said no.
हाँ, लेकिन लिवरपूल में तो खेलेगा यार, I think लिवरपूल के लिए he लिवरपूल should he'll be play. back. Yeah, he'll be He'll back. play. I think that's what we counted him at the starting 11 जो धेनुका ने बोला था. लेकिन I would like to ask मानस यार, मतलब again I know technically speaking it was what your, as in your worst home European defeat, right? As in वो first 25 minutes you were still very good. I know that you don't want to go back to those, that especially second half performance. लेकिन there was something not Liverpool kind that I saw. I know Madrid are known for it for comebacks and against Real Madrid we are talking about. लेकिन यार कहीं ना कहीं मुझे लगा that tactically Klopp, did he ask or did the players kind of take a step back? मुझे लग रहा था just press that was going on for the first 20-25 minutes by Gakpo and Co right from the front थोड़ा सा कम लगा, or was it just the class of Madrid? Like something was wrong, right? There was something wrong for sure tactically. मुझे लगा कि something was different in the second half. Did you notice something, Manas, specifically that you want to change right now? There was nothing wrong. I think we played well in that game. जो हम लोग मतलब well in the sense जो हमारी औकात है ये season. मतलब we are not good this season. So वो जो पहले 20-25 मिनट हम लोग खेले, we punched above our weight this season. और I think the pressing was still on point. The issue is कि अब रियल मैड्रिड को उसके इमीडिएटली बाद मैंने रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको देखा और एथलेटिको के 11 के 11 अपने बॉक्स में थे. ओके Exactly. और हम लोग हमारे चार इवन व्हेन वी आर फकिंग 4-2 डाउन, हमारे चार उनके बॉक्स के एज पे थे. सो टैक्टिकली हमने कुछ चेंज नहीं किया. वी बैक्ड आवरसेल्फ and because of which we scored that second goal which got an error from Courtois. The reality is that उसके बाद it was a master class from Ancelotti bro. बेंजेमा भी मिडफील्ड में आ गया. उसने सिर्फ बोला कि भाई तुम नेक्स्ट 15 मिनट 2-0 As he निकाल does. लो, कुछ भी कर लो, विनिशियस को बॉल डालो बस, उसके बाद देखेंगे. And that's how they got their game back, and after that their confidence increased. We didn't do anything wrong per se. We were pressing bro. The pressing was still there. And that is why we conceded 5, because this season we have not pressed well, we have not played well. Yeah, Case in और agreed. point, individual errors भी थे खैर. I think Joe हाँ वही Gomez. exactly, we have not playing well. So case in point, Manchester United, we beat Manchester United 7-0, we beat Manchester City, and then we lose to Bournemouth, we lose to Leeds, we lose to Wolves, we lose to Nottingham Forest. Right. So yes, season is like this season reminds me of my fitness journey post COVID. I am doing CrossFit, I'm running, I'm doing yoga, but then on the weekend I drink so much that पूरा हफ्ते का waste हो जाता है what I do. So it is an up and down thing. I am that result didn't like 3 goal ka difference was not too shocking for me. Of course, the manner in which was bad because we were leading 2-0, and then the goals we conceded, the type of goals we see. Real Madrid बहुत अच्छी team है, Of course. but we made it so easy for them with some of our goals. नहीं मानस, that is the thing. Even Real Madrid are not एकदम top Real Madrid Yeah. नहीं लग रही है ना I generally. know, थोड़ा चल में but Dhenuka. but Real Madrid sucking is still second, no? Yeah. Real Madrid point. sucking still score 5 at Anfield. Liverpool sucking lose to the teams that I mentioned. And this season Right, we are right. bad. We are poor. We are a poor team. Like not poor team. We are poorer from what we are used to seeing. So कहीं ना कहीं it's confidence also matters, right? When you kind of have ups and downs. exactly. And don't be surprised in the second leg if we score first, huh? And then 20 मिनट के लिए भैंचो हम सब पागल हो जाएंगे. And then Real Madrid, And that is Ancelotti the will only raise. way. If you have a glimmer of a hope, that is the only thing that Yeah, you need. like we might score first. Ancelotti eyebrow ऊपर करेगा और खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद वापस. That is Actually वो possible. मेन टैक्टिक है. Ancelotti का मेन वेपन तो आईब्रो है. And Dhenuka knows it. लेकिन निधि यार, again I know we can talk about confidence, about moments, individual form and all that. लेकिन जो वीकेंड में देखा है, ट्रेंट केम ऑफ एंड आई एक्चुअली जनरली एम हैप्पी जब प्लेयर आता है और खुश नहीं होता. आई एम एक्चुअली हैप्पी. आई लाइक दैट प्लेयर. आई एम लाइक नो, आई लाइक द फैक्ट दैट ही वांट्स टू बी देयर. लेकिन can we read too much that Klopp against Klopp? I didn't expect Trent to kind of do that. And again there are reports कि यार उसने जाकर kind of interview में बोला है that kind of he said कि यार we should be doing better as a team, etc. So is there more than what we are thinking? Is there something again Milner coming on tactically also? I felt कि थोड़ा सा weird था क्योंकि आप you needed 2 goals and Trent is the best passer in the team really. I know Milner is bad. लेकिन is there more problems? Hence, मतलब, what are you alluding to?
नहीं, मुझे ये लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट in terms of changing the personnel ना कहीं Klopp is either missing the tactics. Secondly, is he finally saying that nahi, I trusted, say for example, certain players a bit too much, or those players are maybe now saying कि नहीं, how can he change, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना चेंज करने का. लेकिन Trent, for me, in that moment I didn't expect him to come off, to be honest. तो मतलब were you surprised as a Liverpool fan, Nidhi? I'm not surprised. The thing is, if you look at the जिस तरह से हम लोग खेल रहे हैं ये सीजन, क्लॉप ने बहुत सारे अनकैरेक्टरिस्टिक डिसीजंस लिए हैं. जैसे अगर आप कोई भी मैच देखोगे तो यार बेसिकली हम क्या है ना कि हम हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी, जो इंजरीज हैं, जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, हम एक ऐसा स्टाइल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो सबके दिमाग में तो है लेकिन बॉडी से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है. So and hence you see Henderson struggling so much, and hence you see Fabinho struggling so much. Fabinho की तो खैर चलो एज उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन Fabinho is like we've run him into the ground. Same with Trent. We have made these guys play too much football. Trent का ठीक है, ये वो 23 का लोग बोलेगा, but he's not a machine, right? He needs some backup. उसका backup कौन है? Milner, who's again very tired. 5 साल एक स्ट्रेट खेला है रोबो एंड ट्रेंट. निधि कंटिन्यू. लाइक एवरी फकिंग गेम दैट कैन यू इमेजिन. आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट निधि इज सेइंग. आपका मिडफील्ड इज प्लेइंग एवरी गेम. लास्ट ईयर वी प्लेड 63 गेम्स with that intensity. Then you had the World Cup this year, then you had the Nations League, and now you're playing again with that intensity. Bhai, you are tired. Sorry Nidhi. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ यार. देख तो कोई बोलेगा यार तेरे पास ना अगर मर्सिडीज भी हो ना, तेरे को एक्सेलरेटर के ऊपर से कभी कभी तो पैर हटाना पड़ेगा ना. इफ यू कीप पंप, इफ यू कीप पुटिंग फुल थ्रॉटल, कहीं ना कहीं तेरा इंजन खराब होगा ना. तो वो ये सीजन हो रहा है. ये मैच के बारे में देख, ट्रेंट को हटाने का जो डिसीजन था वो ठीक है, मुझे भी नहीं समझ में आया, बट वो मैच में तो यार आई वुड आर्ग्यू द सेम थिंग अबाउट साला भी अच्छा नहीं खेल रहा था, तो साला को भी सब्स्टिट्यूट कर maybe सकते he थे. should have got a rest as well. I could argue the same about Nunes. खैर Nunes को तो सब्स्टिट्यूट किया था, बट द थिंग इज यार देख, अभी वो मैच में हमारी मिडफील्ड क्या थी, यू हैड बैचेटिक जो 18 साल का है, वही आप उसको इतना ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो एकदम हाई प्रेशर सिचुएशन में. हम थियागो, लाइक द वर्स्ट पॉसिबल टाइम थियागो हैज गॉटन इंजर्ड. लाइक हम लोग का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद थियागो थोड़ी देर बाद आया एंड देन ही इज आउट. तो वो मैच में तो यार आई वुडंट सिंगल ट्रेंट आउट, एंड आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को इट्स अभी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि भाई वो बहुत ज्यादा उसको बुरा लग रहा है एंड ये वो, दैट्स द थिंग. आई थिंक दैट it's a combination of a lot of things, but it comes mainly from control, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल ही नहीं है. मतलब if you look at the midfield, that's, चाहे आप फुल बैक्स के थ्रू अटैक कर लो, चाहे आप, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस एरा यार, आई विल टॉक अबाउट जो जब ड्रॉगबा खेलता था. ठीक है, लैम्पार्ड वाज द स्वॉशबकलिंग मिडफील्डर, लेकिन सपोर्ट पीछे कौन प्रोवाइड कर रहा था? जॉन ओबी मिकेल, राइट? डेको. It's you need an entire system. You have solid players in the middle, right? हमारा वो core ही missing है. Van Dijk was very poor in that game. Van Dijk was very poor in that game. नहीं, इवन मतलब जस्ट एज अ न्यूट्रल मुझे ये भी लगा कि इवन दैट मोमेंट व्हेन मिलनर वाज ब्रॉट ऑन, आई थॉट दैट जब पेनल्टी होगा ना, मिलनर विल टेक द पेनल्टी एज वेल. आई नो दैट साला वाज प्रोबब्ली नॉट लुकिंग लाइक दैट साला इन दैट मैच, लेकिन जनरली साला फिर भी यार, कम ऑन, ही इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द चैंपियंस लीग. भाई इट्स ओके, ही मिस्ड अ पेनल्टी, राइट? वो उसने अपने प्रीमियर लीग में अपने प्रोफेशनल करियर में एक पेनल्टी मिस की, पहली, वंस. ठीक है, एंड पीपल आर सेइंग साला को कॉन्ट्रैक्ट देके ही गलती कर दी है. रियली? अरे भाई कौन है यार, मैं मिलना चाहूंगा ऐसे लोगों. अरे भाई स्ट्रीम्स में जा, मतलब 22 गोल मारने के बाद he has played Liverpool this season. Like he has scored 22 goals this season, but he has played Liverpool by signing a new team. मतलब, and he is the highest in the Champions League in the season for all teams put together. Like he's the highest scorer यार. मतलब and the thing is ना अंकित, ट्रेंट के बारे में ना, इट्स लाइक कि दूसरे जितने राइट बैक है ना दुनिया में, सब एकदम परफेक्ट है, उनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है.
एक्सट्रीम्स हो जाते लोग तो यार, इट्स ओके। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, एग्जैक्टली आई नो व्हाट यू आर एंड सेइंग। ट्रेंट का तो मतलब ट्रेंट को मतलब टारगेट करना ना, क्या है ना, आप मैं ओके, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ। मैं लिफ्ट में था, ठीक है, अपने मॉम डैड की बिल्डिंग में, एंड वहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे लाइक हु गो टू स्कूल, ओके, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया तो मैं उनको बच्चे ही बोलूंगा, सो गो टू स्कूल एंड देन वो दे सी मी प्रेजेंट, ओके, द चैंपियंस लीग, एंड देयर लाइक कि भैया यू वर देयर, वी सॉ 5-2, हाउ डिड यू फील, लिवरपूल, जैसे मतलब पूछ रहे हैं हाउ डिड यू रिएक्ट, and a kid who is in 8th standard who doesn't play football, he said Trent is shit defensively, okay, and I'm thinking to myself ki the narrative is sold so much, and don't get me wrong, he has a lot of areas to improve, but कि लिफ्ट में भी कोई मेरे को बोलता है ट्रेंट इज शिट डिफेंसिवली, और मतलब वो बंदा देखता भी नहीं होगा 3:30 बजे, उसको नेक्स्ट दिन स्कूल जाना होता होगा, तू समझ रहा है? सो वैसे सब चीजें लाइक द नैरेटिव्स आर सोल्ड सो बैडली, सब बट सोशल मीडिया का इफेक्ट है यार, मतलब हाँ ऑनेस्टली, वही मतलब ना, मी एंड हाँ निधि हैव मतलब स्पोकन इनफ ऑन दैट, एवरी स्ट्रीम it's में देयर like समथिंग अदर दैट कम्स अप, मतलब दैट्स फॉर श्योर। it's like क्रिप्टो, मतलब साले तेरे को इट्स लाइक क्रिप्टो एंड द शेयर मार्केट, मतलब साले तेरे को मतलब एक्सेल शीट में सम का फॉर्मूला लगाना नहीं आता होगा, लेकिन तू क्रिप्टो पे ज्ञान देगा, है ना? मतलब तेरे को कुछ पता नहीं एग्जैक्टली। है, लेकिन तू ज्ञान देगा नहीं कि ये खराब, ये हिज शिट एंड हिज चैंपियनशिप लेवल एंड ऑल दैट। आंख बंद करके ट्रेंट अगर अवेलेबल होगा ना, सब लोग बोलेंगे वी फक, वी शुड गो फॉर हिम, वी शुड गो फॉर हिम, वी शुड अरे गो फॉर हिम। there are trades which I don't think any right back in the world can do. I know that defensively you can question, but to tell him that he's anywhere close to what people are doing, I don't यस agree at all. ऑफ कोर्स वो डिफेंसिवली ही इज ससेप्टेबल, And no बट no player is perfect as well, to be honest, hardly any. So that's anyway. But by I एट दिस wanted to kind पॉइंट, of change the topic थोड़ा बहुत. या एट दिस पॉइंट अब मेरे को जेन्युइनली हंसी आने लग गई है, मतलब इट्स, और कुछ मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो जैसे अभी भी लोग ऐसे ट्विटर पे टैग कर देते हैं टीए शिट, लाइक ओके ओके, मतलब क्या बोलूं? चलो एनीवे, मतलब इट्स नाउ, मतलब वही आई हियर यू एग्जैक्टली, क्योंकि यार वही है, हेट मिल रहा है तो मिल रहा है, वो अपने को भी यार, एज अ चेल्सी फैन आई कैन रिलेट टू दिस। बट ओजान कबाग यार, थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर चैट अगेन, शाउट आउट आपको। हाई निधि बोल रहे थे, निधि कॉल मी डिल्यूजनल बट वी विल फिनिश टॉप 4। आई थिंक लिवरपूल हैव अ गुड चांस यार। आई नो वीकेंड में बोर्नमथ के साथ इट वाज डेफिनेटली अ ब्लिप, big blip for sure, लेकिन कहीं ना कहीं it's Spurs and Newcastle that you're competing against. I think you have a good chance in my personal opinion. लेकिन थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करूंगा, Dhenuka coming to you again, talking about controversies यार, I cannot have a Real Madrid fan not comment about it. I know it's really controversial, लेकिन बारसा को तो चल रहा है, and Real Madrid into, मतलब I think Real Madrid are also filing, right, if I'm not wrong, they are part of it, even they'll be caught to court, जो बारसा का चल रहा है about, you know, them offering money. So generally speaking, what is the Real Madrid fan thinking right now? That is it only the start of things to come in La Liga, or is it only like Barca that you feel that very strongly, like जो हो रहा है finally it's they're due this? Real Madrid actually gave a statement right yesterday. I'll just try and put it the announcement, but just want to know your thoughts, Dhenuka, generally. What do you think about the Barca thing going on with them offering money? And I know technically they've claimed that BBR is just allegation, and the fact is that they have claimed that nahi, it's basically the consultancy. For consultancy purposes they're done. It's just that the person that the president of, you know, the referee association, he was part of it while La Liga was operational. Lekin actually it's for consultancy services. Lekin generally speaking, these things are coming out more openly. Even Carl, to be honest, I know it's totally off topic. Lekin for example, Burnley have got a transfer embargo for people who don't know. ठीक है, तो वहां पर इशू वहां पर यूवेंटस का हुआ है, तो Real Madrid taking defensive action now. Dhenuka, like what are your thoughts? La Liga generally, where is it heading now? So two things. First, so like we are not privy to what is actually going on, whether the allegations are true, whether Correct. they're not true. We are not privy to any of that stuff, and so we can't have an opinion on what is going on. That is what the investigation is all about. So that aside, I think Real Madrid gave a very what is it called, a diplomatic statement, a very sort of
I would say it's a very halka statement. If you see the statement from the other clubs, La Liga mein, they are way more vocal about ki, yeah, this should happen, and the investigation should be conducted, and the club should be punished, and like they are way more stronger. Real Madrid के official announcement में, at least as far as I interpreted it, it was more like the fact that पूरा जितना वर्बिएज है वो अगर आप निकाल दो उसमें से, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि they will go, if they are called upon, or when they are called upon, they will go to court and they will basically give their version of whatever. Like they will go to court when they are summoned. This is what they have said. So वो ना इधर का है ना उधर का है, and I do understand this has more than just it's more than just a Real Madrid thing, because there are implications on La Liga. There is a lot of politics in the league itself, and also if you look at what happened previously, Real Madrid actually did not was one of the clubs that did not call upon this investigation as strongly, whereas Atletico did and the other clubs did. So because again, it's more than just club politics, right? At this point it is more like La Liga, so they will look at it from La Liga ka perspective, and the other angle to this is also ESL. So with the ESL, there are 3 clubs that are currently in in the ESL, and one of which is Barca, one of which is Real Madrid. So there are a lot of plates to spin. There is a lot of politics going on. This is just more than a Messi Penaldo kind of a situation. It's not. It's No, but not it is as happening a little bit more. That's why my question was generally from a La Liga perspective, not really just Yeah. a fan perspective. Because for me, मतलब it is happening throughout. आप देखो, it's no coincidence that Juventus का हो रहा है, Man City का हो रहा है यहाँ पर. I know these are all different cases we are talking true. about. Burnley, मतलब even in championship, right? Again, remember, it's not easy to come up. जब आप championship जाते हो, Burnley is a good, and in fact they're doing very well, right? As in, if I'm not wrong, our company is doing great with them, and now they've got this, so it's a huge can I say, but kahin na kahin, I think it's about football in general. I think with the ESL coming, this is something जो हम देख रहे ज़्यादा things are coming out, and again, मतलब every club, to be very honest, अभी यार they must have got the lawyers already कि यार हो सकता है हमें भी आ जाए. That is quite a possibility. I know it starts from maybe 3-4 clubs के साथ हो रहा है, but I am actually feeling that it might come a little bit more, and it's somewhere down the line related to ESL. I don't know, Manas, Nidhi, if you have any perspective वहाँ पर, what do you feel? Because I think it's no coincidence, right? As in, it's again coming up a little bit more in the open of late. The allegations are from 2001 apparently. बहुत From लंबे when समय का, और अभी Bartomeu आ was रहे हैं. there. Exactly. 2001 या 11? नहीं 2000, that decade basically, that decade का है basically. So 2000, नहीं मतलब mid ये 2000 ये से ESL लेकर. ESL के बहुत पहले से है जो एलिगेशन है. नहीं, ESL का I don't think there is a tie-in directly with ESL as far as the allegations. but But the digging Yeah, has yeah. happened because of ESL is what I feel. That's my personal I opinion. don't think so. I don't think so at all. मेरे को ऐसे नहीं लगता. मैन सिटी का भी है, जैसे मैन सिटी का तो यूएफा एंड प्रीमियर लीग का है अभी, ये भी है, बारसा का भी चल रहा है. और ये बारसा का फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं हुआ ना कि मतलब कुछ ऐसे आवाज आ रही है अबाउट रॉन्ग डूइंग्स. ओके, फर्स्ट टाइम तो नहीं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ किया है. आई एम जस्ट सेइंग बट इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन. तो कुछ तो झोल झपाटा है. लाइक एवरीवन ट्राइज टू फाइंड लूप होल्स. ये तो है. Yeah. अरे मैं When पहले you're भी बोला हूँ, एवरी क्लब यार कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है. ये आई हैव टू आई थिंक लिवरपूल को छोड़ के, क्योंकि हम तो कुछ खर्चा ही नहीं करते. हम तो हम तो हम तो देखो, हम क्लियर कट दिखा रहे. देखो, हमने एक नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया, अभी 2 नए स्टैंड बनाए, हम प्लेयर खरीदते सर. और ऑन अ सीरियस नोट, सब लोग, एवरीवन ट्राइज टू फाइंड लूप होल्स, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ा आई एम फियरिंग कि बारसा का थोड़ा आ रहा है आवाज ज्यादा. और मेरे को ये ESL रिलेटेड बिल्कुल नहीं लग रहा. मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा, because La Liga is saying all these things, right? It is all coming from within. So yeah, Spain. exactly. Like, That's what I so, wanted to add. That Tebas Yeah. is 100% opposed to ESL. ESL. He's anti ESL big time. Yeah, he's Right, anti ESL. and Tebas is
एंटी, मतलब हम माने चाहे नहीं माने, टेबास इज एंटी बार्सिलोना ऑल्सो। ही हाँ He's मतलब anti ठीक है, everything. Like, I don't think आप anyone likes आप Tebas. अगर टेबास को, ही इज लाइक, सो ही इज लाइक, मैं कैसे बताऊं, ही इज लाइक अर्नब गोस्वामी। कभी कभी वो बात करता है ना, वो सही बोलता है, लेकिन वो जिस तरह से अपनी बात बोलता है ना, आप जो उससे अग्री करते हो वो भी डिसएग्री कर लोगे, क्योंकि टारगेट टारगेट तो किया है उसने, ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यार जैसे आप लोग ने बोला ना कि हर क्लब के, इफ यू गो एंड लुक फॉर लाइक skeletons इन द क्लोजेट, एवरी क्लब Yeah. विल हैव अ फ्यू, राइट, बट ही इज जस्ट, ऐसा लगता है कि वो टारगेट कर रहा है। और एंड नहीं, बट इट नाउ यूवे के साथ हुआ है कुछ, अभी सिटी के साथ हो रहा है, वो कब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा? मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, दिस इज जस्ट नॉट कमिंग फ्रॉम लाइक यू नो लाइक बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली जो लिवरपूल और यूवेंटस का फाइनल हुआ था उसकी वजह से 5 years English teams could not play in European Cup competitions, you know, and Yeah. 85 to 90, okay, 86 to 90, Everton, Liverpool suffered, like the best teams, best eras of our team didn't play, of our club didn't play European because हमने सफर किया, and it was our issue जो हाइसिल में हुआ था unfortunately. मेरा पॉइंट ये है कि अगर कुछ गलत है किसी का भी, I just I the point is, as a football fan, मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अगर मेरा अभी भी एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स है कि ये तो कुछ नहीं होगा। अगर रॉन्ग डूइंग हो रही है, कोई पकड़ा जा रहा है, तो भाई दे शुड गेट द हार्शेस्ट पनिशमेंट। और मैं ये सिर्फ कोई क्लब्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप यू आर फर्स्ट टू हैव अ गो एट बर्नली, बर्मिंघम सिटी को बीच में कितना पॉइंट डिडक्शन मिला था, इफ यू Correct. रिमेम्बर। हाँ, Correct. माय और पॉइंट Pepe इज, said the same thing. Pepe says the same thing that I'll be the first one. अगर वो होता है तो मतलब for Man City for मेरा सिर्फ यही instance. पॉइंट है कि जब भी, अब मतलब बर्मिंघम सिटी ने जो फाइनेंशियल घपला किया है वो कितना किया रहेगा, मेरे को कोई बता सकता है? बरी बेचारा मतलब गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो जो ऊपर वाले प्लेयर झोल कर रहे हैं वो तो बच जाते हैं। मेरे को हाँ. एज एज एन आउटसाइडर देख के ये लग रहा है कि Easy targets. कुछ नहीं हो रहा, कुछ होगा ही नहीं। माय पॉइंट इज कि आई नो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और मैं तो फिलहाल ये चल रहा हूँ, पकड़ के चल रहा हूँ कि एवरीवन इज इनोसेंट, किसी ने कुछ किया नहीं, सिटी ने नहीं किया, बार्सा ने नहीं किया, यूवे ने नहीं किया। बट अगर पता चलता है कुछ है झोल, दे शुड गेट द हार्शेस्ट ऑफ पनिशमेंट। तू, मैं, धेनुका, हम लोग पागल की तरह 3-3 3:30 बजे तक फुटबॉल देखते हैं, 4:30 बजे तक लाइव करते हैं, इमोशन हमारा लगा है, हमारा प्यार लगा हुआ है, हम रोते हैं, हंसते हैं, जीते हैं, यूरोप जाते हैं, टैटू बनाते हैं, ओके। अगर ऐसा है, कोई भी है, लिवरपूल भी है, तो पनिशमेंट सख्त से सख्त होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी वॉचिंग फुटबॉल थिंकिंग यार सलीम मलिक और मोइन खान इन्वॉल्व है क्या? याद है वो पाकिस्तान का एरा जो मैच फिक्स होता था, अजरुद्दीन था, ये था, ऐसे ऐसे देख के मैच लगता था उस शिट ये फिक्स्ड होगा। एक हमेशा याद है शारजा के मैचेस हमेशा लगते थे फिक्स्ड होंगे। मेरे को और यार, फुटबॉल ऐसे नहीं देखना है, मेरे को हाँ, फुटबॉल और ऐसे यार, नहीं देखना है, ये और यार डर से। अगर और अगर और अगर गिल्टी है ना, तो जैसे मानस बोल रहा है, वो जैसे वो हुआ था ना, जैसे पिछली बार मैन सिटी का हुआ था, ईदर यू से दे आर गिल्टी एंड यू पनिश देम, ये जो तुम 100,000 पाउंड्स का फाइन लगाते हो ना, ये क्या है? मतलब इट्स लाइक ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया आपको, आप पर्ची नहीं कटवा रहे हो, लेकिन आप उसको 100 रुपया दे रहे हो। या तो गो द होल हॉग, और नहीं तो फिर लेट देम गो। अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फाइन क्यों ले रहे हो? मोरिनियो ने बोला था ना कि अगर सिटी इज इन द रॉन्ग, गिव देम द हार्शेस्ट ऑफ पनिशमेंट, बट अगर Correct. उन्होंने कुछ गलत किया नहीं तो प्लीज लेट देम गो। आपने फाइन Yeah. क्यों Fine लगाया क्यों? फिर किस बात का? लॉजिक ही नहीं, इट्स अबाउट सेटलिंग, मतलब वही यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो अंडर टेबल वाली चीज है। लेकिन यार अगेन थैंक्स फॉर सुपर चैट ब्रो। अगेन क्वेश्चन फॉर ऑल पैनल, आर यू ईएसएल? मैं आई एम अज्यूमिंग भाई, अगेन नॉन प्रीमियर लीग में तो यार पीपल वुड वांट ईएसएल इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। आई डोंट, धेनुका, यस फॉर ईएसएल क्विकली? Yes, from me, but I have like a whole lot of other reasons. Um, the main thing which people don't realize is also that the new Champions League format is pretty much very similar. So a lot of the things that people usually talk about, right, saying that it's going to be like it'll take the fun out of this, that
I mean, it's क्या बोलते हैं वो, it's between the devil and the deep sea. So हाँ वही, and नहीं राइटली पुट। मेरा मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं काफी बार बोला हूँ यार, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल समझ लो यार, फॉर मी द लेगेसी दैट चैंपियंस लीग इज क्रिएटेड इज नेक्स्ट लेवल। लेकिन मैं अग्री करता हूँ दैट देयर हैज टू बी समथिंग फॉर द से मिड टेबल क्लब्स अगेन, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द मतलब एफर्ट था बाय हैविंग अ यूरोपा लीग, बाय हैविंग पहले यूएफए कप होता था, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस रिमेंबर राइट, तो यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, ये दैट वाज द आइडिया ऑफ इट, लेकिन अगेन इट इज नॉट वर्किंग आउट, तो देयर हैज टू बी कहीं ना कहीं वहां पर चेंज लाओ, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ टोटली न्यू थिंग ऑल टुगेदर। पता है यार 30 साल हो गया, मतलब आई नो टाइम यार फ्लाइज देखो, चैंपियंस लीग को भी। यार देख I अंकित, just अगर like to point out one thing, and the comments are going crazy about like Tebas and the Barca bias and everything. Uh, श्योर। People may know, may not know. Real Madrid also last year sued Tebas because there was this whole deal he was trying to broker with CVC, which was a private equity firm, and it was awarded basically उसके साथ deal करने के लिए उनको 10% of the rights मिलेंगे करके, and that was not a lucrative deal, and I believe Barca and Real Madrid both opposed, but Real Madrid actually went to the extent of, I think, suing, or we're talking about suing Tebas. So it's not like this is not the first time he has been in the news for these things. Let's put it that way. And जैसे ही कहा कि like no, these things are very complicated and murky, and they are not what they seem like, to be very honest. तो हम जैसे लोग तो इसके बारे में we can only we don't know 90% of the facts. That's why everything is going on. But yeah, like Manas said, like something broke in me when the whole Hansi Cronje, Azhar, Nayan Mughia, when the match fixing thing happened, and it's you go back, of course, but then it's always with that thing, right? Like, was this fixed? And there is that somewhere you hold back, and then it's not always that. Like, it taints the experience, is what it is, and you don't want that to happen to football. like मैं एक hypothetical scenario देख रहा हूँ, सोचो कि अगर like hypothetically shit hits the fan for two clubs which have been allegedly और allegation डाला है और उनसे trophies ले लेते हैं ये वो, how would you look back as a fan, the moments that you celebrated, the moments that you felt? True. Would you still watch a game with the same passion and commitment? No. Like the point is, it's just so much is at stake. You have to somewhere, अगर किसी ने गलत किया है तो मेरे हिसाब से they have to be punished. Like या football is such a pure sport still, I feel, इट्स अ apart from साइकिल the मानस, वापस से बहुत लंबा साइकिल होता है भाई वो, टू गेट दैट मेरे को सेम फील ना, डिफिकल्ट यार देख, ऑब्वियसली। मैं एक चीज बोलता हूँ सुपर लीग के बारे में। देखो यार, जब प्रीमियर लीग शुरू हुआ था ना, तो प्रीमियर लीग के बारे में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की बोली गई थी। मैं राइट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुपर लीग इज द ब्लडी पनिशर, कि वो सारे इफ दे गिव 30-40% ऑफ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग ना, इट इज अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि भाई एज अ लिवरपूल फैन हम तो यार वी वुड वांट समथिंग जो हमको कुछ तो इक्विटेबल फुटिंग पे लाके खड़ा करे ना, नहीं तो हम तो नहीं वी हैव नेवर बॉट अ 100 मिलियन प्लेयर यार, वी हैव नेवर वंस बॉट अ 100 मिलियन प्लेयर। हमने ऐसा कभी विंडो लाइफ में नहीं देखा है कि हमारे क्लब ने ऐसा 200 मिलियन खर्च कर दिया। तो हाउ डू यू देन compete with the kind of spending that is going on? But ESL is backed by, मतलब पता है ना, ESL का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है भाई, जेपी मॉर्गन ये सब है। तो if you're going to trust Wall Street bankers and think they have the welfare of the world, like and they are all like getting together and singing joy to the world, then you're living in cloud cuckoo land. उनके लिए भी पैसा है, मनी है, but मनी इज अ गेम। हाँ उनके But लिए भी Nidhi, to पैसा है, play लेकिन devil's advocate, what about the current UCL? नहीं, What which about is what I'm getting to. Which is what I'm getting to. The problem is that you are now stuck between like a rock and a hard place. क्योंकि exactly? UEFA भी वही It's कर the रहा है। दैट्स devil व्हाट and the धेनुका, deep sea. एग्जैक्टली It's exactly Yeah, that. वही वही। So but इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि UEFA का क्या है ना कि भाई वो I don't know if मतलब the current model, because you look at how it's like आप एक दादा के साथ काम करना चाहते हो कि आप एक कॉर्पोरेट इसके साथ काम करना चाहते हो जहां पे फिर भी आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है। और ESL जो है ना, सुपर लीग, देख आई थिंक इट्स एन इवेंचुअलिटी, बट आई थिंक इट विल, मतलब जैसे लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, जब बिफोर इट गेट साइंड देयर आर लाइक V17 17th वर्जन, वैसा कुछ होगा, चेंजेस होंगे। for sure.
Yeah, but it has a legacy यार कहीं ना कहीं. But anyway, ESL आ भी गया ना, तो मतलब सबके पास पैसा होगा, ओके? तो फिर who will be the most richest club in the world, वो कैसे डिसाइड होगा? तो उसके वजह से और भी चीजें होंगी, मतलब loopholes will now always be there. पहले फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अगेन हाइपोथेटिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल तो PSG, मैन सिटी, रियल मैड्रिड आर द टीम्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, चेल्सी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी. चलो सबके पास ये अभी लेवल है, पैसा है. सो हु इज नाउ द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्लब इन द वर्ल्ड, Club. कैसे पता चलेगा? सो नाउ So अगेन here's my thing, Manas. So the thing is, the whole idea of ESL, or at least how Florentino Perez puts it, is that this, in a way, sort of combats that, because for him, again, it's that Real Madrid now cannot compete with all the clubs that now so have that so is, much money, right? yeah, because so it is his interest, no? It's his, of course, it's his interest. And why do you think Barca? So Barca is in it because they are also in like a financial situation. So मेरा Why point do you think मैं all समझ रहा clubs हूँ. initially jumped into the ship, despite did they not read it? Of course, and had they not received the kind of backlash that they did, all the clubs jumped into this ship, ये तो despite फिर reading everything, right? सही टाइम पे आया है ना, तो फिर मतलब जब भी तुम लोग सब लोग प्लेयर्स साइन कर रहे थे तभी किसी को इशू नहीं था. जब भी नहीं, रियल मैं मैड्रिड, ऐसी बोली बार्सिलोना, नहीं. एक डेकेड Despite सब this, प्लेयर्स साइन कर रहे थे. look, despite this, Real Madrid, like, तो कुछ भी बोलो, कोविड ये होने के बाद कर लो या जो भी हो, we have been second, only behind City. We've still churned profits. That Yeah, is a yeah. different or a separate issue. That is how you, like, if you run a club like a business, that's a different aspect of it altogether. You don't consider that. But the idea he was pitching was for all the other clubs who don't have the kind of financial backing that, say, a PSG has. That was the whole point of Why it, and would, that's why no, no. every club is going to It's look like, after itself. नहीं, बट मेरे को एक So बात बता, why would Dhenuka, someone like a politician, बोल रहा हूँ, पापा पेरेज, want everyone to be as same as Real Madrid, as same as PSG, as same as this? क्यों? उसमें उसका क्या फायदा? उसको क्या मिल रहा है? उसको आज तो भी वो मिल रहा सेकंड, आज भी सेकंड तुम बोल रहे हो ना, सेकंड रेवेन्यू कर रहा है. Okay, if everyone is earning the same amount of money, how do the rich get richer? There is some jhol because everywhere. because the UCL for him does not benefit the way an ESL would, right? Yes. यार रियल मैड्रिड है It's a लेकिन business. रूलर्स ऑफ But यूसीएल anyway, यार मतलब. never mind. This is like a total business kind Yeah, of a मतलब we can question. talk about it whole night to be Good. very देख honest यार, Yeah, इसलिए देख मतलब क्विक it's like, ओपिनियन चाहता था मैं बस, I'll लेकिन tell you अगेन बिग अप टू I'll tell एवरीवन you यार. देख I'll tell you like this. I'll tell you it is like this. तेरा ना जनवरी में अप्रेजल होने वाला है, ठीक है? तूने बहुत मेहनत की है, तूने सितंबर में तेरा जो इतने साल तक तूने पूरे साल जिसने मैनेज किया ना, वो मैनेजर छोड़ के चले जाता है. देयर इज अ न्यू मैनेजर इन, एंड यू आर होपिंग कि भाई ये नया बंदा है, फ्रेश आइडियाज हैं, ये तो ही विल ओनली लुक एट वर्क. What you don't understand that guy is also looking after himself more than you, and that is the case here, right? It's in the end, it's all about money. Papa But Perez is not going to save football, huh? yeah, Like, no, nobody's and no, exactly, and neither does the current one. Like, It's a no, political thing, Manas, honestly. everywhere, right? No one, everyone is going to look after their own interests, their own exactly. club, and everything. So there is no end to this debate. If you're saying, which is why repeatedly we've been saying the same thing, that it's between a choice between the devil and the deep sea. अभी एक हमको पता है क्या है, and एक हमको पता नहीं है. So it's the unknown. One is unknown and one is a known evil. So what do you go for? So that is the thing. And considering, one thing which people don't consider frequently is that UCL is also changing. They are also changing the format. They are trying to cram in as many games as they can. The number of games is going to drastically increase starting next year. So they are also looking to make their own profit because they are running it as their own business. So at the time, but the thing is that they are kind of sneaking it in, and so obviously they, like, it doesn't draw as much attention. But एक look at it in the like current format से compare मत करो, right? So एक anyway, एक एनालॉजी है मेरे दिमाग में, बट वो मैं ऑफ स्क्रीन बोलूंगा बाद में, खत्म हो जाए स्ट्रीम तब. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ चलो नहीं भाई, बोल एनीवे सकता.
भाई जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, जो आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन द लास्ट हाफ एन आवर, दिस इज नॉट एन ESL stream, definitely it's part Yeah, of it let's not because do La Liga ESL and stream. Yeah, Premier because League have ESL gotten can go together. on and on and on. But that's good. Exactly. That's good ना अंकित कि इतना organically सब कुछ चल रहा है बिल्कुल बाहर. बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स पार्ट ऑफ इट, इसलिए मैं लाया वेयर आई कुड हैव अवॉइडेड दैट, लेकिन मैं बोला डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ डिस्कशन बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक यूसीएल विल लीड टू दैट इवेंचुअली, राइट? बट एनीवे, कमिंग बैक टू द गेम इन इटसेल्फ, और आई नो लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, आई नो बाकी गेम्स भी है फॉर पीपल स्पेशली मैन सिटी और इंटर फैन जो भी है चैट में भाई, वी विल बी डिस्कसिंग थोड़ा बहुत एब्सोल्युटली ऑन दैट एज वेल। लेकिन एक और मैं यहाँ पर एक स्टार का रखो कमेंट अबाउट एक और ट्रांसफर विंडो की है। I know game tactically we have discussed a lot, but what do you think about the Guardiola factor? Again, Nidhi, Guardiola saying that he's a Liverpool fan, but at the same time, I know Chelsea को तो मना ही कर दिया था for whatever reason. His club, as in Leipzig, said no. And by the way, he scored against City, and he's right up there. And it's again about money कहीं ना कहीं। लेकिन Real Madrid, do they need him or Liverpool? Like generally, आपने देखा है रियल मैड्रिड कंसीडरिंग गोल्स, बट निधि इवन लिवरपूल डिफेंस कहीं ना कहीं, वुड यू से दैट यू कैन, आई नो कोनाटे, वर्जिल, वैन डाइक, यू स्टिल से यस आर स्टार्टर्स, लेकिन इवेंचुअली डू यू सी लिवरपूल नीडिंग दैट वन मोर सेंटर हाफ? कहीं ना कहीं मैटिप इज फेजिंग आउट, निधि, वुड दैट बी फेयर टू से और नो? नहीं, हमको सेंटर बैक तो चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई ग्वार्डियोल वर्सेस बेलिंगम, मतलब दिस इज यूटोपिया। ये नहीं होने वाला है, ठीक है। आई लाइक टू कीप माई फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड। देख, अब उसने बोला है यस मुझे पसंद है। देख क्या होता था ना, जब मेरे को ना जब जैसे मेरे को बचपन में कोई ऐसे चॉकलेट चाहिए होती थी ना, तो मैं अपनी मॉम को बोलता था कि मॉम को बोलता था, पापा सुन रहे होते थे कि मेरे को ना ये चॉकलेट बहुत पसंद है, इन द होप्स दैट व्हेन पापा कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस ही बाइज मी दैट चॉकलेट। ये यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स यार, कितने सारे प्लेयर्स ने बोला लिवरपूल मेरा ड्रीम क्लब है, चेल्सी मेरा ड्रीम क्लब है, ठीक है। वो इट काउंट्स फॉर नथिंग। बिल्कुल अग्रीड, 100%। राइट। और यार भाई, इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू स्पेंड अ Guardiola, ठीक है, इफ यू हैव टू लुक एट द मतलब कम से कम 70-80 मिलियन तो कहीं नहीं गया, शायद ज्यादा, 70 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाई, आप रख लो मलंग सार को, आप अपने सर पे बैठा लो। गौरव कम ऑन यार, भाई थोड़ा बेटर ऑप्शन, इतना हमारे पास 30,000 प्लेयर्स है, थोड़ा बेटर ऑप्शन देता। मलंग सर इज गुड बट कम ऑन। लेकिन अगेन प्लीज कंटिन्यू। यार देखो, ग्वार्डियोल I don't think so, because again too much money, we have other areas जहाँ पे हमको ज़्यादा concentrate करने की ज़रूरत है, that is the midfield. So yeah, that's the thing. Dhenuka, what about you? Because Madrid same problem, right? Center back Rudiger, मतलब what is your report on Rudiger? I think he is. It was a sort of rocky start, but I think he has come into his own now a little bit. And we had this problem कि we had Militao, Alaba, and Rudiger, right? We have three center backs, and बाकी दोनों जगह में problem है, but we have three center backs. So whom do we play? And Militao has had a fantastic season, so subbing him out is not an option. And then when you have a steady center back partnership, usually like no coach is going to sort of break that, right? It's not going to keep trying like a new combination But every other game. अगर Ancelotti नहीं रहता, and imagine, like I know there are a lot of reports saying that there might be a possibility of Zidane going back or Tuchel. अभी भी यार वो again it's for paper talk, I know. लेकिन it all depends on that also, right? मतलब if for example say कल को अगर Tuchel जाता है, that I can see that going three the back and things like that. I'm just saying, like so from that perspective I think it makes sense, right? Guardiola to Real Madrid. कहाँ खेले? We already have Militao, we have Alaba for our CB, and we have Rudiger. So one more CB. We need like a right way. Oh God, Right it's back. not going to happen. But we need reinforcements on the right and the left. We have to look at sort of remedying. Let's put it that way. Because Mendy है तो सही, but the problem with Mendy is a different thing, that when Mendy plays, because he does not contribute offensively, does not overlap with Vinicius, so Vinicius cannot play openly. Whereas even having a Camavinga in certain games, right, because he does
make those runs and he overlaps with Vinicius and Vinicius plays better there, but then he can't offer the same kind of defensive abilities that Mendy can. So वहाँ पे the problem is that Mendy needs to open up a bit more offensively. So I don't know what Real Madrid is going to do, because that does impact your sort of one of your star players performances with Vinicius. तो वो वहाँ पे है. And then our right back Carvajal has been the best game that he dropped was against Liverpool in the UCL final, and after that stellar performances देखो तो मतलब मुझे I cannot think of any performance where you can be like, oh wow, Carvajal, you know, Yeah. that kind of he has also And had an it's 80 season. interesting that you And talk Real about Madrid has said the that they are not going to sign. Okay, that is the other great thing. See, for all this talk about Real Madrid spends like $1 billion and whatever, I don't know, man. Like after an Eden Hazard, when have we signed? Or who have we after Bale and Hazard? Who have we signed? Who is this Chouameni but it's March? for working. Come But on. when we Chouameni. signed Chouameni, we also gave away so many other players, right? Like look at the number of people going out. Like Bale went out, Isco went out, Marcelo went out, Yeah. Ramos went Thanks out, for Varane Kovacic, by went the way. out, Kovacic went out, but we couldn't do anything about it. ठीक है. Odegaard went out. So many people left. Kase went. So and whom did we get? We've gotten Camavinga, we've gotten Alaba, Rudiger, Chouameni. Three of those are यार लेकिन Hendrick. लीग जीत गए, यूसीएल जीत गए लास्ट Hendrick. सीजन, और क्या चाहिए? कम ऑन. एंड्रिक जो आया नहीं है ना, आने तो दे. अभी तक तो आया भी नहीं. अरे एंड्रिक हम स्काउट किए थे, पर चौबरी और एंड्रिक को हमने स्काउट किया था, रियल मैड्रिड लीव अगेन, दैट्स फॉर अनदर डे. लेकिन टॉकिंग अबाउट दैट, यू मेंशन द यूसीएल फाइनल, और मानस एंड निधि, मैंने एक चीज नोटिस किया है. आई थिंक जो वीकेंड में था, आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग, दीज फोर हैव एक्चुअली डन वेरी वेल टुगेदर. दैट रॉबर्टसन, Konate, Virgil van Dijk, and Trent, right? I think if I'm not wrong, this was only the second time that they actually lost when these four started. So again, matlab, that actually tells me that it's actually not a bad starting four for sure. Liverpool is just about form and everything, right? Again, talking about starters, Manas, क्या होगा One starters second, यार? I just had a question. Is Konate fit? Yeah. Konate has been And playing for the last 2 Sorry, weeks. not Konate. Kya? What am I? Sorry, you mentioned Konate. Gomez is unfit. Is Thiago playing? No. There were Yeah, reports so- that he'll be back. No. No. It's nowhere near. Basically क्या है ना, हम लोग, हमारा attack is pretty good right now. Defensively, like we are okay, but हम बीच में बहुत मार खाने वाले हैं. Like Hendo is out of legs, he'll start. Fabinho is not in form. अब कौन खेलेगा? एलियट खेलेगा या बायचेटिच Correct. खेलेगा? पता नहीं. So देख, मैं तो predict कर रहा हूँ No, lineup genuinely, देखो. I read that he was back. Thiago was back. करके could be back. if That is Thiago was available, then मैं तो बोलता थोड़ा चांस है, बट कुछ नहीं है. मतलब रॉबो खेलेगा, कोनाटे, वैन डाइक, ट्रेंट, एली, आगे अप टॉप साला, नूनेज, गैक्पो, एंड मिडफील्ड में देखेंगे जिसको खिलाना है. आई थिंक हेंडो विल स्टार्ट, Fabinho will start, and I think maybe Elliot will start this one. That is where we get screwed against Real Madrid. Yeah. That, I mean, that mid next season मैं तेरे को लिख के देता हूँ, अपने तीनों के तीनों मिडफील्डर्स अलग होंगे नेक्स्ट सीजन. Yeah, quite possible. I लेकिन think. again, yeah, pretty sure यहाँ पर I think Liverpool has to take inspiration कहीं ना कहीं from Chelsea and Ajax, if at all a comeback is coming at Santiago Bernabeu. But the thing is that if this was last season, na Ankit, I would still have hope. Correct. आप ठीक खेल रहे होते तो आपको होप होता है, बट आप ऐसा खेल रहे हो तो आपको होप होना इज बीइंग, इट्स होप, नॉट डिल्यूजन ना. वी आर नॉट डिल्यूजनरी कि No, हमको ऐसे yeah. लगेगा कि मतलब कि ओह शिट वी विल गो टू बर्नाबेउ एंड बीट देम फकिंग 4-0 3. कम ऑन यार, वी कांट बीट फकिंग बोर्नमाउथ, वी कांट बीट लीड्स, वी कांट बीट नॉटिंघम, वी कांट बीट वुल्व्स अवे, वी कांट बीट ब्राइटन अवे, Yeah. you know. And And 7-0 was a one-off, yaar. मतलब people are saying that. yeah. That doesn't mean कि I will not support my team, I will not think, okay, I will not watch the game, ऐसा कुछ. मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मेरे हिसाब से मैं तो ये भी बोलता हूँ we might score first, bro. Like, and then for 10 minutes मेरे को, निधि को और millions of Liverpool supporters को वापस
The worst thing that we've had this season jagegi, hope. And then Real Madrid and that fucking eyebrow will turn up and then we're fucked. यही होने वाला है भाई. नहीं, but I So must say, as even a as an Real Madrid opposition fan, fan, I was telling Ankit the same thing, that for once it will be nice if we don't like freaking give up the lead, let the other team score first, get into this situation where we need to make a comeback. Not बहुत ज्यादा every game has to be a adventurous हो जाता है comeback. ना कभी कभी. Real Not Madrid every single game मैं needs to be. Espanyol, we conceded within the first 8 minutes, right? And then like come back. But why do we अरे even बट need to come नॉकआउट back? है यार, बट नॉकआउट है, doesn't have to be pretty. You are the kings of not being pretty. No, And the so thing is, yeah, but as a देख मैं, fan, I would like to relive the 2017 memories, I guess. yeah, I'd like to relive 2019, but नहीं हो रहा है ना. So the thing is, look, but that is the inspiration, Nidhi. That's what I'm saying. यार भाई देख, मैं I just want कि ये मैच में जाके ना आप हार जाओ, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, हारना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लड़ के हारो, मतलब पुट अप अ फाइट. You lose, the tie is gone, we are out, that is not the problem. ठीक है, but I want this team to go and just show some fight, that's all. नहीं, that is the thing. I can see a high scoring game for sure. मुझे लगता है Real Madrid not the kind जहाँ पर just sit back वाला चीज होगा. I don't think so. I can see it being a high No, scoring they game, and I have think it Liverpool within will them. go for They it. have it within them. Ankit, what are you saying? But they don't need to. This My season point नहीं is यार. that Real मानव Madrid, this season नहीं. they मतलब they are Real Madrid. हाँ, मतलब They can play ganda, they can play dirty, they can be flamboyant, they can rip you apart, they can do everything, even in this so-called poor season, which you and me are saying about Real Madrid. To be honest, you and me should not be benchmark talking इतना about. ऊपर है. Exactly. Chelsea supporters and Liverpool supporters should not be calling this season of Real Madrid poor, considering जो हमारे नहीं team नहीं, के I am साथ. talking like a football fan, bro. Yeah, come on. I know, I've I know, seen I enough know, football to I comment know, that. I know. Come on. I'm not having a go at you. I'm just saying हाँ, as supporters. yeah, yeah. They are I Real Madrid. understand. Like they will fucking win the Champions League this season as well. For all you know, 15 हो जाएगा. मतलब अभी तो मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब आर्सेनल एफए कप जीतता है ना, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है रियल मैड्रिड विनिंग द चैंपियंस लीग. Speak for yourself. नहीं मतलब ले यार, मतलब जब से पैदा हुए हैं टीवी पे रियल मैड्रिड वन द चैंपियंस लीग. टीनेजर बना रियल मैड्रिड वन द चैंपियंस लीग. पहला पेचेक मिला Wow, रियल I मैड्रिड thought वन as द a चैंपियंस baby you're screaming the लीग. हाँ, Champions League anthem. 1990 में कोई आई एम श्योर उसकी इर्द गिर्द तो रियल मैड्रिड ही जीता रहेगा. बिल्कुल. Again यार, ये हमारा Sauradeep, thanks for the Galactico time comment. पे हम लोग जीते. Absolutely. By सब लोग, again, in case you're not subscribed to Menace and the Monk, you're missing out a lot of content. Do that. But at the same time, if you are new to this channel, do not forget to hit that subscribe button. Doesn't take a buck, like I always say. Lekin we bring a lot of content, not just Chelsea. I am a Chelsea fan, but we try and cover as much content as possible. Same as Menace and the Monk, and of course, give a follow to Bombay Pena. नीचे है उनका भी Instagram ID. To give them a follow for sure. A lot of activities always happening. Lekin we'll move on. I know everyone has, I think, enough predictions to आ गए. I don't think I need to ask for predictions. Lekin quickly, by Man City Leipzig, for me, this is actually very, very interesting. I know हमने Guardiola का बात कर लिया, what not. First, like मैं no problem. I think okay, no problem. Manas has to leave right now, so Manas big up यार. Again, all the best. I know थोड़ा faint hope है, but यार that faint hope रखो यार. I would This say. is the first time in the last 5 Real Madrid Liverpool games मैं present नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेडियम में नहीं हूँ. मैं ऐसा दारू पी के मैच No. देखने वाला हूँ ना, मैं ऐसा दारू पी के मैच और फर्स्ट टाइम मैं बियर हाँ. और मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई विल बी इन दिल्ली दैट डे. Now I'm doubly scared, guys. See you guys, bye bye. Okay, okay, चलो भाई. Anyway, मानस से चेंगली, but again, people do not forget to hit that like and subscribe. भाई निधि सिटी यार, मतलब Pep. We are talking about अपने managers and all that. भाई Pep has looked a little bit worked up यार off late. मतलब what do you think about that fact? यार देखो, जब आप उस लेवल पे इतने साल तक खेलते हो ना, 4-5 साल आप रिलेंटलेस, मतलब 14 मैच And he's been winning stuff at least in the Premier League lots, right? To be honest. So and हमारा तो ड्रॉप ऑफ उससे बहुत गंदा हुआ है. हम तो बहुत गंदा ड्रॉप ऑफ हुआ है, बट सिटी का भी लुक, दे आर स्टिल सेकंड, ठीक है, और अभी भी 5 पॉइंट ही पीछे हैं. तो उनका बिकॉज क्वालिटी इतनी है स्क्वाड में, और मतलब उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए.
वो सब सारे, यार देखो इंटेंसिटी तो ड्रॉप होती है, ठीक है, और वही हो रहा है, ठीक है, वही हुआ है सिटी के साथ भी. इट इज नॉट सो मच अबाउट कि पेप लुक्स ये वो तो, बट डेफिनेटली आई थिंक दैट्स द थिंग दैट हैपेंड देयर. And I'd like to add to that. एक है एक somewhere like they were discussing this कि सभी teams के form में, if you see compared to last season, there has been this dip, and call it the World Cup effect या even the number of matches कितना ज़्यादा हो गया, we don't realize, but like the number of matches every team is playing this year is crazy. It's absolutely insane. तो सभी टीम्स के फॉर्म में ये डिप रहा है. चेल्सी इज नॉट द चेल्सी एज लास्ट सीजन, लिवरपूल इज नॉट द लिवरपूल एज लास्ट सीजन, सिटी इज नॉट द सेम सिटी एज लास्ट सीजन, एंड Real Madrid is not the same Real Madrid as last season. But जो teams have so Barca I think is an aberration to this, okay, because they've had like a really good season and they are playing really well. Apart from that one, like the blip in the UCL, they have been like really playing well. Yeah. Barca fans, you can मैं thank us for Christensen again. मैंने तेरे को एक स्टैट भेजा है, वो डिस्प्ले कर. सी दैट्स द थिंग, दिस इज वन ऑफ द रीजंस पीपल, मतलब लोग इतने आसानी से बोल देते हैं अरे एक्सक्यूज है. अरे एक्सक्यूज नहीं है भाई, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज. आवर स्क्वाड इज स्मॉल, उसके ऊपर हम लोग बहुत इंटेंस फुटबॉल खेलते हैं. And injuries, Injuries. man. Like you can, yeah. Just display that. That's the thing, right? Because We it's look at not this. even like तुम्हारा ऐसा नहीं है कि if you have like amazing bench strength एक पोजीशन We में कि वही इंजरी हो yes. रहा है, right? Injuries are everywhere, हर पोजीशन में. चलो तो रैंक 2 अपना. Yeah, look at लेकिन this. big gap. Look at this. Like this is because हमारा स्क्वाड इतना छोटा है और हमने सही टाइम पे हमने सही मतलब प्लेयर्स नहीं हमने ऐड किए स्क्वाड में. और you look at this, तो इतनी इंजरीज होंगी तो यार टीम And तो people ऊपर check नीचे out Man होगी. City. I know Man City fans in the house. Massive मतलब I know कहीं ना कहीं luck is part of football as well, or it's more than luck in fact मैं तो बोलता हूँ. तो again Man City, I don't know मतलब is it बोलते हैं ना law of averages वाला चीज. कहीं ना कहीं I think they are getting their due. I don't know. I wouldn't like to say that. I wouldn't want injuries to anyone. लेकिन that's a fact as well. लेकिन yeah, but on a serious note, again Leipzig का जो मतलब I know हम एक्सपेक्ट करते हैं मैन सिटी से स्पेशली जस्ट गोइंग एंड बॉम्बार्ड कर दे भाई. इट्स नॉट फुटबॉल, हम फीफा नहीं खेलते. और आई एक्चुअली अग्री विद पेप्स रिएक्शन कि भाई बोला यार 1-1 एट लाइप्जिग इज एक्चुअली अ गुड रिजल्ट. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स नॉट अ ट्रेनिंग पिच जहां पर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइप्जिग हु आर थर्ड इन द बुंडेसलीगा बाय द वे पीपल. They just beat Mönchengladbach, and remember Mönchengladbach is basically the bogey team for Bayern Munich, so you cannot take Leipzig lightly. Like in honest serious note, what do you think? Like, do you see City having enough weekend में they got a hard fought 1-0 victory, or you're saying कि City doing a PSG again, or you're saying नहीं, City are actually on another trail and they are going ahead in the Champions League this time? यार देख, सिटी वाज प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस, तो आई एम श्योर दैट पेप तो उसी से खुश होगा कि 3 पॉइंट मिल गए, क्योंकि पैलेस हैज बीन अ बिट ऑफ अ बोगी टीम फॉर देम. ठीक है, वो कोई टीम्स के साथ आपका होता है यार. हैविंग सेड सो, देख लाइप्जिग ऐसा नहीं है कि लाइप्जिग कुछ कर ही नहीं सकती, और मतलब एकदम डेड रबर गेम है, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई विल बैक सिटी टू गो थ्रू. मेरे को लगता है कि सिटी के पास एक होता है ना जो प्लेयर्स शो अप एट बिग मोमेंट्स, वो वाले प्लेयर ज्यादा हैं. ठीक है, एंड आई थिंक पेप को मतलब थोड़ा वही ट्रेंट वाली बात है कि ओवर थिंक करके आपने बस एक जबरदस्ती का ये बना दिया पेप के बारे में. बट वो आदमी 5 में से 4 लीग जीता है, तो ओवर थिंक अगर कर रहा है तो इट इज वर्किंग. सो आई थिंक लाइप्जिग हैव अ गुड चांस. लाइप्जिग का क्या है ना, देख लाइप्जिग को दे विल हैव टू स्कोर इन द फर्स्ट हाफ. 1-1 है ना, 1-1 इज द स्कोर लाइन, राइट? करेक्ट. हाँ, तो दे हैव टू स्कोर इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि जब आप स्कोर कर देते हो ना सिटी के अगेंस्ट, तो फिर सिटी थोड़ा खुल जाती है. एंड देन दे हैव द प्लेयर्स थोड़े, जैसे सबसोलाई आई थिंक इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. दिस इज वन प्लेयर दैट लिवरपूल शुड लुक एट. अगर हम लोग, वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट इट. हाँ, you are looking at the whole world, Ankit. That's fine, but मतलब right, that's Name the okay. player But that's linked. yeah, Sabzolai we should look at. But I the Werner
को भी वही अगेन बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, बट आई थिंक वर्नर कैन पुल डिफेंसेस आउट ऑफ शेप. अरे चैंपियंस लीग में द कंपटीशन इज मेड मेरे फॉर हिम को क्योंकि नॉकआउट है. यस मेरे को बस लाइप्जिग का सेंटर ऑफ द पार्क आई डोंट सी. मतलब सबसोलाई चलो वैसे वो मिडफील्डर ही है, लेकिन मतलब मेरे को बस लग रहा है कि वो अगर उन्होंने कर लिया ना तो देन दे हैव अ चांस. बट आई थिंक अगेन इंकुंकू इंजर्ड यार, मतलब क्या ही तो बोले. चेल्सी Yes. से प्लेयर लिंक्ड होता है और भाई इंजरी शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हाट वी कैन से. बट ही स्कोर्ड अ हैट्रिक. रिमेंबर भाई, आई थिंक दैट गेम वाज एक्चुअली इन सिटी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल, लेकिन 6-3 जीता सिटी ने लास्ट सीजन के बिगिनिंग में. आई डोंट नो धेनुका, एनी सरप्राइजेस फॉर यू इन दिस वन? No, I also think City is going to go through this match. ओके Because भाई, सब लोग प्रेडिक्शन दे दीजिए. फाइनल बोल रहे सिटी भाई. अगेन फीफा नहीं है, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड नोइंग सिटी. लाइप्जिग 2-1 मैन सिटी, वर्नर ब्रेस. ओके भाई, दैट विल बी गुड टू सी, टू बी ऑनेस्ट. वर्नर यार अगेन थोड़ा अनलकी था, लेकिन एट द सेम टाइम प्रीमियर लीग में वाजंट हिज कप ऑफ टी, सच में बोलो तो. लेकिन पोर्टो इंटर यार, मतलब दिस हैज सम हिस्ट्री. पोर्टो ने एक्चुअली दो इटालियन साइड्स को एलिमिनेट किया इन द लास्ट 4 years. And I know first leg में 1-0 Inter, Lukaku out of all the people scoring that goal. But you have to say that weekend में भी जो penalty लिया Lukaku, it seems like थोड़ा बहुत confidence is back. But again, Lautaro missing the penalty. और I don't know if people know, Porto का जो coach है ना, he used to play for Inter Milan. And I think he qualified with Inter Milan back in 2005. If I'm not wrong, 2005 में they reached the semis. Correct me if I'm wrong, chat or panel, लेकिन I think definitely यार वो he was part of it. I think 2003 था. Okay, 2003 था. लेकिन हाँ, but that is going to be interesting. लेकिन Porto, they have got a lot of victories. लेकिन again, Portuguese Liga versus Serie A, I don't know यार, मतलब 1-0 है. It's at Porto. तो what are you calling, Nidhi? ये वाला Porto game. I think Porto should win because इंटर का थोड़ा यार उनका भी सीजन थोड़ा ऊपर नीचे ही रहा. एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उनका सीजन भी काफी ऊपर नीचे रहा है. दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट इन द सीरिया. आई थिंक आई विल बैक पोर्टो. अभी तो हम पेपर पे ही बात कर रहे हैं, बट तो आई विल बैक पोर्टो फॉर दिस वन. चलो कोई नहीं. वन सेम पोर्टो. मैं एक्चुअली जा रहा हूँ इंटर यार. अगेन मैं चाहता हूँ कि यार लुकाकू स्कोर्स एज मेनी गोल्स फॉर इंटर, क्योंकि दे गेट टेम्प्टेड फॉर द लोन टू गेट एक्सटेंडेड. लेकिन रियलिस्टिकली इंटर मिलान ना एक्चुअली आर नॉट प्लेइंग दैट बैड. इफ यू एक्चुअली सी दे आर एक्चुअली इम्प्रूव्ड ऑन द लास्ट 2-3 महीनों में. लेकिन हाँ, इनकंसिस्टेंट मैं अग्री करता हूँ निधि के साथ. दे आर इनकंसिस्टेंट फॉर श्योर. ओटावियो इज सस्पेंडेड, रिमेंबर ही गॉट अ रेड कार्ड, सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर. बट लास्ट वन यार, क्वारेट्स के लिए यार अगेन नापोली, ओसिमेन, Frankfurt, I think again they're missing Colomani, so pretty sure यहाँ पर not expecting any surprises. 2-0 है. First time होगा Napoli getting into the quarterfinals. That's huge for them. I don't know, मतलब anyone panel calling a they surprise? are the dark horse this time, right? I mean, dark horse in the sense like not that they don't deserve to be there, and of course they are like the underdogs. But Dhenuka, that have they everyone's been rooting. tested? ये मेरा big question. I know that they are great on the eye. I know Liverpool थी group stage में, but was it a Liverpool of like Liverpool that we know, like with all due respect? No, but I think in general, like I think the way they have been playing, uske liye they are being called the underdogs, and also because like I mentioned, right, all the other teams this season, if you see, are a shadow of their own self. So be it Liverpool, be it Real, be it City in the Champions League. So that is another reason why that's the whole underdog story, right? Like you never know, this could be their year, wala whole narrative. It will be tough for them surely आगे जाके. But it's interesting क्योंकि already ये time देख लो तो I want Napoli to get a favorable draw in the quarterfinals. Then it will be interesting. एक बार सेमीफाइनल में आ गए ना, उसके बाद तो it is anybody's game. I want Napoli to win the Champions League. I will be very happy if Napoli wins. So this time another interesting thing is like this always happens, but if you see like PSG is out because like you had a Bayern PSG, and so like one like biggie is out, and then you have Real Madrid Liverpool. In terms of UCL, one other biggie is going to be out, right? So like no matter the result, we know arguably even Dortmund was a form team in Europe. You can argue that also. मतलब उनका बहुत अच्छा फॉर्म था यूरोप में. True. हाँ, but yeah, okay, yeah. You could. I was going like purely by UCL record. हाँ, got it. UCL legacy वाला. Like
call it like seeding versus ranking wala situation, right? Seed versus rank. So yeah, so अरे बोल लो यार जो भी बोल रहा है, मैं PSG is not a नहीं big एक्चुअली club, दिनों come को मैं on. हंस रहा हूँ कि नॉट अगेंस्ट पीएसजी पीपल। यहाँ कल मैं स्ट्रीम में था तो मैं बोल रहा था कॉन्टे ने बड़े बड़े क्लब्स को मैनेज किया, फिर ये किया था, तो मैं लिटरली गिना रहा था यूवेंटस, चेल्सी, फिर टॉटनहम। मतलब उप सॉरी यार, मतलब टॉटनहम को बड़ा क्लब बोल दिया, सॉरी अगेन टॉटनहम फैंस, लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पर आई नो थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन अगेन यू आर राइट, एज इन नापोली probably if they are getting a favorable draw, मतलब वही है, you would say probably So Porto why Inter not में, is what I think. Yeah, it's going to yeah. be very interesting ये time का. अगेन ड्रॉज भी डिटरमाइन करते हैं बहुत है। अब कहीं आई वोंट लाइक कि 2021 में द फैक्ट इज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पोर्टो, हम जब क्वार्टर फाइनल में मिले थे, I kind of sensed it. Okay, now that we have got Porto, can we go far? Again, Real Madrid was a big test semis में 2021 में, लेकिन you always have that one or two tests तो होते ही है, लेकिन you need some favorable draws also. अगर if you're not Real Madrid, with all due respect, that's what actually मुझे लगता है। लेकिन again भाई एवरीवन इन द चैट, अगेन आई होप एवरीवन इज लाइक द स्ट्रीम, और अगेन मैं शाउट आउट देना चाहूंगा टू बॉम्बे पेनिया, टू मेनेस इन द मॉन्क, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर बोथ आवर चैनल्स एज वेल। यस, बाय द वे हमारे 2 चैनल्स है, दूसरे चैनल में हम करते हैं न्यूट्रल वॉच अलोंग्स और क्रिकेट कंटेंट, यहाँ पर हम करते हैं एंड टू एंड फुटबॉल डिस्कशंस। तो इफ यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल्स एज वेल एज मेनेस इन द मॉन्क, इट विल मीन अ लॉट टू अस, एंड गिव अ फॉलो टू बॉम्बे पेनिया। मैंने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट या ऑल द 4 गेम्स वी हैव डिस्कस्ड। फेवरेबल ड्रॉ का बात ही चल रहा है, तो आई नो इट्स थोड़ा जंपिंग द गन वाला चीज, लेकिन पैनल आई नो हाइपोथेटिकली है, आई नो इट्स 2-5, विद ऑल दैट लीविंग असाइड, अगर फेवरेबल ड्रॉ मिलना ही है तो भाई Dhenuka, I'll start with you. Whom do you want if it gets to that? I know Friday hai. I don't know. I'm not jinxing anything. Listen, I really don't want to Nidhi will jinx also anything. not give away. I know that. I know. Knowing Nidhi, even he will not. Nidhi doesn't predict scores. Nidhi can do this. Hypothetically, यार Nidhi, come on. ऐसे भी it's क्या percentage chances are less, right? Come on. मैं प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करता हूँ, बट यार देख, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, क्वार्टर फाइनल में सोचो अभी कौन आएगा ड्रॉ में। चलो, TCS भी also Real Madrid fan. Jayant भाई, interesting. Can Milan do unthinkable? But again, it's been a crazy week already for me यार। और मैं यहाँ पर for people ISL fans, I was looking at it, वो भी extra time में गया यार आज, तो it be great week for me अगर next week भी हो। लेकिन we'll cover the draws as well, लेकिन we'll probably do the watch along as well. Pretty sure मैंने सुन Monk का भी content होगा, people do not forget। And again, I request everyone here, अगर आपने नहीं किया like और subscribe, please consider doing that। आई नो काफी सारे कमेंट्स आए थे, आई माइट हैव मिस सम कमेंट्स, यहाँ पर मैंने स्टार किया है बहुत। अगेन वी स्ट्रीम एवरी डे, सो ट्राई एंड कम ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीम एंड विल ट्राई एंड टेक योर कमेंट। अगेन बिग अप टू एवरीवन हियर, एंड यस बाय द वे देयर इज अ मेंबरशिप गोइंग ऑन, एंड मैं मुझे मालूम है मेंबर्स, यू काइंड ऑफ आस्क मी फॉर मोर इमोजीज, आई हैव टू जस्ट ऐड मोर इमोजीज, तो लेट्स हैव सम इमोजीज। भाई कौन सा टीम को सपोर्ट करो? आई थिंक मैंने डार्विन नूनेज का इमोजी डाला है फॉर लिवरपूल, एंड फॉर मैड्रिड मैंने डाला है विनीशियस का, सॉरी आई पुट वाल्वर्डे का इमोजी, सो आई इट्स टाइम टू चेंज और नॉट, डू लेट मी नो ऑन दैट, लेकिन आई विल ऐड सम इमोजीज also, and yes, absolutely hoping for the best for Chelsea in Milan. Yeah, long way to go, but again great to have you guys. Dhenuka, any last words, any events happening, please feel free to share with the chat. I don't think I actually don't know. I don't think there was a screening for the first leg, but I was not here, so I couldn't go. But I don't think there is one happening now. Then there'll be one for the Classico only. So चलो कोई नहीं, people give a follow, नीचे है उनका इंस्टा आईडी, so give them a follow, you'll get all the updates. निधि, come on, I think Liverpool Chelsea भी I think भिड़ रहे हैं ना in a few weeks time again. midweek, 1st Oh April, yeah, so 5th probably April को yeah, midweek game है। it'll be huge, हाँ, मतलब क्या, लेकिन लग रहा है यार टॉप 4 तो लग रहा है यार। आई थिंक यू मतलब थोड़े ब्लिप्स आए हैं, बट स्टिल यू आर ऑन द गुड रन यार। बट जनरली व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी यार? आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन यार। पॉटर अगेन, वी आई रिमेंबर इतना डिस्कस किए थे, 3 मैचेस अब ऑन द ट्रॉट, वी हैव वन, यार अब गोइंग इन तो द राइट चेल्सी के डायरेक्शन। लिए, यार देख अभी मतलब राइट डायरेक्शन तो बोलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई थिंक देख क्वालिटी हमेशा से थी चेल्सी में, इट वाज अबाउट फाइंडिंग द राइट मिक्स। लास्ट 3 मैच में चेल्सी ने गेम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है। आई थिंक पॉटर इज वेरी टैलेंटेड, द ओनली थिंग दैट is working against him is the owner's patience and the fans' patience. और चेल्सी का भी सीजन बहुत टॉपसी टर्वी रहा है, बहुत इंजरीज हुई हैं, बहुत इश्यूज हुए हैं, राइट?
And then Chelsea, I think देखो टॉप 4 टॉप 6 तो मुझे नहीं पता, वो तो खैर मैं इवन अबाउट लिवरपूल में नहीं बोलता हूँ, बट आई थिंक once if you get a good draw in the quarter final, then you don't know, क्योंकि Yeah, it सेमीफाइनल depends a ऑनवर्ड्स, lot. मतलब मैं क्योंकि अभी ये जिंक नहीं करना चाहूंगा, मेरा अभी आ गया मोमेंट, लेकिन you're right actually. It depends a lot on that. Last question एक है, is Madrid squad good enough to compete with Bayern or City in latter stages, or they are just relying on UCL mentality? We are the king of this tournament. Uh, who are the favorites यार? मतलब to be honest, Dhenuka, from your perspective right now. So मैं बोलती हूँ ना, like last season, I think I honestly last season for me Real Madrid were the underdogs. Purely because of the season, like City and Liverpool and all these guys were having, and then there was the whole like Mbappe factor and the run we had, right? Like look at the teams we had to beat. So it was not an easy run, and it was UCL में क्या है ना, it is that one game at a time वाला mentality है. So and then the आगे आगे जैसे तुम जाते हो, and then the final thing is like that on that one day what happens, and that's what clicks. And Real Madrid is made for these big games. So and what I liked last season was the fact that even this was, many people forget, a team in transition last year. Because last year we had lost Ramos, we had lost Varane, and we didn't know how Alaba was going to fit in. We didn't know how we had Kamavinga as our only other signing, right? And we didn't know how these sort of kids were going to perform in the UCL, and it was just, I think it was like this one phenomenal season that hit us out of nowhere, at least as far as the UCL and even La Liga went. But that was also, but this year it has not been the same. This year, uh, and what I really don't like is इस साल का एक और चीज ये है कि जब तुम्हें पता है, I think वो बोर्ड में और बाकी मतलब फैंस बोलो या इवन कार्लो इन लोग सब में बोलो, देर इज दिस सम काइंड ऑफ लैक ऑफ आई डोंट नो कम्युनिकेशन या क्या डिल्यूजन में बैठे पता नहीं. इन अ ईयर वेर यू आर प्लेइंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ मैचेस, यार तुमने कोई साइनिंग्स नहीं किए हैं. यू हैव as usual, obviously you have so many injuries. Look at the amount of time Benzema has been out, right, injured. And last season Benzema was in like the form of his season. You can't expect him to replicate that kind of a season. Your Modric, your Kroos are a year older. Chouameni is in his first season this time. You can't keep. तो लास्ट ईयर का जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रांसेंडेंट अमेजिंग सीजन था, वो रख के हर साल वो एक टेम्पलेट बना के नहीं चल सकते तुम. यू हैव टू मेक रीइंफोर्समेंट्स, जो ये टाइम रियल ने नहीं किया है. सो दैट इज व्हाट I think all of my stuff is stemming more from that, that than the fact कि form कैसे चल रहा है Real Madrid का. Because of course, like Benzema did the magic last year, and then you also had like everyone else pitching in at the right time. हमारे yeah. last year का injury record देखो, it was not, we had like a season where it was almost kind of flawless. We did not miss someone for too long at all. We didn't miss people in the big matches apart from like the drubbing we got in the Clasico, I guess. But ये साल ऐसा नहीं है. ये साल we have the World Cup. Like everyone is exhausted. You can see जो हर साल होता है, that dip in the form in the key players towards the end of the season. एंड तुम्हारे पास ये टाइम सब कुछ जानते हुए भी यू हैव नॉट मेड रीइंफोर्समेंट्स छोड़ो, एक बैकअप प्लान नहीं रखा है. तुम Castilla के प्लेयर्स को यू कैन नॉट थ्रो देम इन नाउ एंड से प्ले. लाइक डोंट गेट दैट Alvaro at the 90th minute and say like let's see what he does. क्या करेगा वो? What is the point of यार getting that Renuka, guy? लेकिन come on, as in you have to win this game and your favorites यार. मतलब I know that. No, I'm not. No, the question was, do you think going forward we can beat City, Bayern, or are we relying on this? Like we have the mentality wala thing. So that's अच्छा what एक I was सेकंड, I saying. think It is more than Nidhi needs to mentality leave. this season. Nidhi needs to leave. Sorry, We bro. are anyway I need ending to- in a few minutes, people. लेकिन Nidhi यार, I big up need यार to- again. Thanks for coming on यार. Again, big up to Menace and the Monk people. Give them follow. Nidhi, see you soon and all the best यार. मिलते हैं जल्दी. Cheers, bye bye. Thanks. Yeah, Dhenuka, please continue. No, so that was it. So my thing was that we can't rely on this. UCL mentality is one thing, but you can't like have that season after season after season. If you
रिलायंस नहीं हो only सकता rely उस on पे। that. बिल्कुल वो बिल्कुल, मैं तुम्हारा एग्री गेम विद प्लान यू नहीं हो 100%। सकता है, क्योंकि you have to have a squad that matches that. Last season का जैसा squad था, मतलब injury less एक season था. Benzema was in like some kind of like insane form, and Vinicius was playing like insanely. I would still say even this season he has continued, but everyone, right, like Valverde बोलो, Rodrigo बोलो, it was a phenomenal season, and mostly तुम्हारा वो जो difference maker था Benzema, ये साल तुम्हारे अगेन यू आर हिट बाय इंजरीज, रिकॉर्ड नंबर ऑफ गेम्स, तो वो एक विनिंग मेंटालिटी कैन टेक यू सो मच, बट यू नीड अ स्क्वाड, राइट? वी डोंट हैव, look at the kind of depth other teams still have, not Liverpool, but look at the depth that other people have. हमारा बेंच कौन है वो सोच के देखो एक बार, राइट? व्हाट इज योर नहीं नहीं, बेंच? वही दैट्स व्हाट आई शोड दैट देयर इज डेफिनेटली अ प्लान, इसलिए हम ट्रांसफर्स के बात कर रहे थे, आगे बिकॉज़ देयर इज जाके अ नीड। एग्जैक्टली, so आगे जाके, so that cannot be your strategy is my thing, that UCL mentality can't be a एंड strategy, एज मच एज so that बेंजेमा we इज डूइंग lack आल्सो, this लाइक season. बेंजेमा भी मैक्सिमम इस लेवल पर कितना खेलेगा? आई थिंक 12-18 मंथ्स नहीं होगा, and he's also, he has been riddled with injuries this season, one after the other वो after दिख the रहा है other after एग्जैक्टली। the other. He's missed so many key विनीसियस जूनियर matches. हैज बीन योर मेन गाय इन द सीजन, सच में बोलो तो। Absolutely. And so because of that क्या हो जा रहा है now, it has been so far, the plan has been like, pass to Vinicius and बाकी आगे बचा लो यार. That has been the strategy, right? Like that is, and like I keep saying, everyone now sort of knows this. So what they do is they put like 2-3, it's not 1v1 for Vinicius anymore. So you throttle the attack there, and then you don't have another game plan. So you can't really, there's only so much your winning mentality can get you. You still need a squad, and year on year, you cannot rely on that to answer that question. So we will kind of, yeah, for teams that have us figured out, we will face a tough time. फेयर इनफ, बट एनीवे देखते हैं, मतलब यहाँ गट फील मुझे तो आ रही है धेनुका दैट अगेन रियल मैड्रिड चेल्सी होने वाला है। कहीं ना कहीं आई नो लिवरपूल फैंस वुड से यार अभी भी यार फेंट होप है, डेफिनेटली देयर इज अ होप, इट्स नेवर से नेवर, स्पेशली विद कार्लो बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि वो दोनों चीज देखा है विद मिलान एज वेल एज बेसिकली विद रियल मैड्रिड। लेकिन लेट्स सी, हम फ्राइडे अगेन कमिंग बैक टू इट, और मैं देख रहा हूँ काफी कमेंट्स मुझे पूछ रहे हैं मेसन माउंट एंड अदर थिंग्स। यार हमने बहुत सारा बात किया है, आई थिंक वी हैव व्हाट ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes वी हैव बीन लाइव, कम ऑन। So big up to Dhenuka भाई, Dhenuka OP हो जाए। Yes, Dhenuka का channel भाई, it's Almighty Blues FC for now. Whenever she wants, she can come to the channel, and Almighty Sports Plus B and Menace and the Monk, I would say. तो भाई सब लोग do not forget to follow them, as well as Bombay Penia. Of course, Bombay Penia को कुछ भी activities you can give a follow to Dhenuka. उनका सबका links are below, so give them all a follow, I would say. Also, I would give a shout out to my members. Couple of members है हमारे Almighty Goats who are basically our our channel holders as well. उनको भी tag किया मैंने, उनको भी एब्सोल्युटली शाउटेड है। हरजस अगेन बिग अप। और जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यस बारसा एंड मैन यूनाइटेड फैंस, बारसा फैंस तो सॉरी यार, नो पन इंटेंडेड, हमने थोड़ा डिस्कस किया बारसा के बारे में, लेकिन आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट यूरोपा लीग। आई नो आई जस्ट रियलाइज्ड दैट बारसा रोड, नो पन इंटेंडेड यार, गलती से हो गया लेकिन मैन यूनाइटेड फैंस भाई हम आएंगे एब्सोल्युटली। यस आई नो आप भी बहुत बड़ा लीग लियो, विल बी कमिंग बैक विद मे बी अ वॉच अलोंग टुमारो एंड डे आफ्टर, एंड मे बी परसों हम करेंगे एक यूरोपा लीग स्ट्रीम भी, एंड बीच में आई नो हु एम आई सेमीफाइनल्स आर पेंडिंग, तो उसके लिए टाइम निकाल के आऊंगा। लेकिन Dhenuka, again great to have you, and again people, everyone, do not forget to like, share and subscribe. Like I said, it's always a fan channel for all to Thanks see. for having me on. I always love coming on this अरे channel, you know always that. always चलो भाई, तो all the best, and of course देखते हैं अब कौन मिलता है फ्राइडे को, and we'll be covering that as well. See you soon. Bye. Bye.